national level faculty development program and Degree College of Physical Education. Welcome. Today we have with us greatly enthusiastic, intellectual, and eminent personality, Dr. Rajiv Chaudhary, NCT award as the Best Teacher Educator 2019. Presently, he is Professor at Pandit Ravi Shankar Shukla University, Raipur, Chhattisgarh from 2012. From 2012, Head School of Studies in Law from 2019 and Joint Proctor from 2015. He is also adjunct faculty at Rashtriya Rakta University, Gandhinagar, Gujarat. He has also been a visiting professor at Gross University, Poland, and Trier University of Applied Sciences, Trier, Germany. Accolade of Excellence from International University of Complementary Medicine in 2009. Awarded Professor of the Year consecutively for 2 academic year 2014-15 and 15-16. Received Lifetime Achievement Award from Physical Education Foundation of India, PEFI, in 2009. Received Honor of Fellowship from IMS BHU. His 109, he has mentored 17 PhDs and completed 4 research projects sponsored by UGC, CCOST, and AIMS. He has published 17 books and 30 chapters in books. And he has many more achievements and accomplishments which would not be possible to acknowledge here at the once due to shortage of time. So I would like to request Dr. Chaudhary sir, who is here with us to present a lecture on applied statistics, to please commence the lecture. Sir, please. Thank you, madam. Thank you very much. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay, thank you very much. At the very outset, I would like to express my sincere thanks to the principal of Degree College of Physical Education and all the members associated with this program for providing me an opportunity to speak in front of you. I am feeling great pleasure as I have got this opportunity. I am directed by the organizers to speak in both the languages, English as well as Hindi. So I will speak in both the languages, English as well as Hindi. I will discuss about basic concept of research and applied statistics. I will also discuss about the different statistical tools which are applied to analyze data. एक अनुसंधान या शोध की एक मूलभूत बातें करेंगे, उसके साथ साथ उन सभी सांख्यिकी तकनीकों की बात करेंगे जिनका उपयोग आप आंकड़ों के विश्लेषण के लिए करते हैं. तो शुरू करते हैं. आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक कंसेप्ट. तो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्लाइड और my delivery will not be of one way process, it will be of two way process. ऐसा नहीं कि केवल मैं बोलता रहूं आप सुनते रहें. बीच बीच में आप मुझे रोक सकते हैं, मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स. मैडम, is it visible on the full screen? बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिसर्च, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च एंड स्टेप्स ऑफ रिसर्च. तो पहले भाग से शुरू करते हैं. आई डिवाइडेड माय होल प्रेजेंटेशन इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स. इस पूरे प्रस्तुतिकरण को 4 विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है. मीनिंग, टाइप्स, स्टेप्स एंड डेटा एनालिसिस. आई विल कंसंट्रेट ऑन डेटा एनालिसिस. आंकड़ों के विश्लेषण पर मैं अधिक बल दूंगा क्योंकि आयोजकों ने मुझे निर्देशित किया है कि इस क्षेत्र में अधिक बात करूं. तो शुरू करते हैं. क्योंकि अभी मैं देख रहा था तो एक स्टूडेंट्स आर आल्सो अटेंडिंग दिस
साइमल्टेनियसली विद द फैकल्टी मेंबर्स। तो एक आधार बनाने का प्रयास करते हैं। शुरू करते हैं मीनिंग से। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन, दैट इज मीनिंग ऑफ रिसर्च। यदि रिसर्च की बात करें, अनुसंधान की बात करें या शोध शब्द की बात करें, तो दिस कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, री एंड सर्च। कोई नई बात नहीं है, हम सब जानते हैं कि यह शब्द रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है, री एंड सर्च। लेकिन कुछ नया भी जानने का प्रयास करेंगे। रिसर्च मीन्स, re means again, search means to find out. It means research is to find out again and again. Since all the students are curious by nature, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी प्रकृति से बड़ा जिज्ञासु होता है, तो उसके दिमाग में, मस्तिष्क में प्रश्न उठ सकता है कि what is the need to find out again and again when the truth is established। जब एक बार सत्य स्थापित हो चुका, जब एक बार समाधान निकल गया, तो उसकी पुनरावृत्ति की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि इसके शाब्दिक अर्थ में लिखा है, since it's clear from its derived approach, to find out again and again is known as research। इसकी चर्चा करेंगे, जानना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले इस पूरी यात्रा की बात करते हैं। आई विल डिस्कस अबाउट द होल जर्नी। हम सब जानते हैं कि अनुसंधान एक ऐसा क्षेत्र है जो शुरू होता है प्रॉब्लम से। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए प्रॉब्लम एंड एंड्स एट सॉल्यूशन। समस्या से समाधान तक की यात्रा ही है। अब इस समस्या से, ये एक 100 मीटर स्प्रिंट हम करते हैं। मान लीजिए हमारी स्टार्टिंग लाइन हमारी प्रॉब्लम है, हमारी फिनिशिंग लाइन हमारा सॉल्यूशन है। तो इस स्टार्टिंग लाइन मींस प्रॉब्लम से फिनिशिंग लाइन मींस सॉल्यूशन तक हम क्या करते हैं? जो कुछ करते हैं, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिसर्च। वो अनुसंधान की श्रेणी में आता है। हम सब जानते हैं कि फ्रॉम प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन वी डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। कोई एक गतिविधि नहीं करते हैं, वी डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। वी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, वी फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस, वी कलेक्ट द डेटा, वी एनालाइज द डेटा, वी ड्रॉ कंक्लूजन्स, एंड वी ऑल्सो नो दैट, और हम यह भी जानते हैं कि जहां एक से अधिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, दैट इज नोन एज ए प्रोसेस। उसको हम कहते हैं प्रक्रिया। तो कुल मिलाकर अभी तक की बातों से क्लियर हुआ कि रिसर्च इज ए प्रोसेस वेयर एज एक्टिविटीज आर कैरिड आउट टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। अभी तक की बातों से एक हमने परिभाषा का निर्माण किया कि अनुसंधान वो प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए। लेकिन साथ साथ एक बात और जोड़ दी कि द प्रोसेस शुड बी सिस्टमेटिक। यह प्रोसेस सिस्टमेटिक होना चाहिए। तो क्या हम घर की कोई गतिविधि करें, मान लीजिए घर का एग्जांपल लेते हैं, हम घर चलाने के लिए कुछ सभी एक्टिविटीज, एक गृहिणी है, घर में सिस्टमेटिक एक्टिविटी नहीं करेगी तो घर नहीं चलेगा, तो घर तो तब भी चलेगा। तो व्हाई सिस्टमेटिक? सिस्टमेटिक क्यों? Ladies and gentlemen, dear students, when we do systematic activities, the probability of success will be maximum. Otherwise, the probability of success will be minimized. Every investigator want to attain the maximum probability of success. Due to this reason, we do systematic activities. लेकिन ध्यान रहे कि what we have to include in systematic, कि सिस्टमेटिक का अर्थ क्या है? इसमें सिस्टमेटिक में हमें किस किस को क्या क्या सम्मिलित करना है? The systematic word has two inbuilt characteristics. First one is we have to follow a sequence. हमें एक क्रम को अपनाना नहीं अपनाना, उस क्रम को नहीं तोड़ना। And the second main inbuilt characteristic of the word systematic is it should be well defined. ये ठीक से परिभाषित हो, सटीकता से परिभाषित हो। मीन्स एवरी इंडिविजुअल शुड लीड टू द सेम टाइप ऑफ मीनिंग और कंक्लूजन्स, कि जिसका अर्थ प्रत्येक व्यक्ति विशेष वही समझता हो, अलग अलग अर्थों में न ले। तो कुल मिलाकर अभी हमने एक परिभाषा का निर्माण कर दिया है। आई विल स्पीक इन बोथ द लैंग्वेजेस, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में बात करते हैं कि रिसर्च इज ए प्रोसेस वेयर एज एक्टिविटीज आर कैरिड आउट systematically to find out the solution of any problem। कि अनुसंधान वो प्रक्रिया है जिसमें गतिविधियां आयोजित की जाती हैं सिस्टमेटिक, किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए। तो दो हमने अर्थों की बात की, एक तो डिराइव्ड मीनिंग शाब्दिक अर्थ कि टू फाइंड आउट अगेन एंड अगेन,
और एक हमने इस प्रक्रिया के अर्थ को जानने का प्रयास किया कि ये प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एनी प्रॉब्लम। क्योंकि समस्या नहीं होती तो क्या रिसर्च होती? शायद नहीं होती। तो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एनी प्रॉब्लम? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एनी प्रॉब्लम? ओरिजिन मीन्स व्हाट इज द ओरिजिन? एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मान लीजिए आप में से एक कोई पीएचडी का स्कॉलर है। पीएचडी का स्कॉलर, शादी हुई उसकी, नई नई शादी हुई। हिज वाइफ डायरेक्टेड हिम, जेंटलमैन गो टू मार्केट परचेज वेजिटेबल्स, बाजार जाओ सब्जी लाओ। समस्या खड़ी हुई ना। सब्जी नाम की एक ही वस्तु रही होती तो समस्या नहीं होती। सिंस देयर इज अ चॉइस, जहां चॉइस होगी, ये लेनी है ये लेनी है, एक सामान्य भाषा में, रिसर्च की भाषा में भी बात नहीं कर रहे हैं कि वेयर देयर इज अ चॉइस देयर इज अ प्रॉब्लम, वेयर देयर इज अ वैरायटी देयर इज अ प्रॉब्लम। लेकिन चॉइस और वैरायटी तो हमारी दैनिक भाषा में यूज किए जाने वाले शब्द हैं। तो एक शब्द आए वेरिएंस, वेयर देयर इज अ वेरिएंस देयर इज अ प्रॉब्लम। जहां स्कैटर्डनेस और कॉम्पैक्टनेस, जहां डिफरेंशिएशन होगा, वहां प्रॉब्लम होगी। लेकिन अब रिसर्च की भाषा में, क्योंकि वेरिएंस भी, दिस वेरिएंस वर्ड इज क्लोजली एसोसिएटेड विद स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, लेकिन हम तो अभी बात कर रहे हैं रिसर्च की। तो एक शब्द आया वेरिएबल। द ऑरिजिन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज ए वेरिएबल। आप फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंसेज के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में कोई रिसर्च करते हैं, स्पेशली इफ वी डू क्वांटिटेटिव रिसर्चेस, यदि हम संख्यात्मक अनुसंधान करते हैं, तो वी conduct researches by taking variables. So we can say that the origin of any problem is variable, कि किसी भी समस्या की उत्पत्ति चर से हुई। वेरिएबल का हिंदी में अर्थ चर। तो इस वेरिएबल को भी जानने का प्रयास कर लें कि वेरिएबल क्या है। परिभाषित करते हैं कि वेरिएबल इज ए कैरेक्टरिस्टिक दैट हैज द टेंडेंसी टू चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, प्लेस, इंडिविजुअल। अगेन आई रिपीट, दोबारा दोहराता हूं, वेरिएबल इज ए कैरेक्टरिस्टिक दैट हैज द टेंडेंसी टू चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, प्लेस, इंडिविजुअल। चर वो विशेषता है जो समय अनुसार बदलती हो, व्यक्ति अनुसार बदलती हो और स्थान अनुसार बदलती हो। जो व्यक्ति, स्थान और समय अनुसार परिवर्तनशील हो वो है चर, वो है वेरिएबल। साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स का उदाहरण ले लीजिए, एंजाइटी, स्ट्रेस, एग्रेशन, डिप्रेशन, स्टेट एंजाइटी, ट्रेट एंजाइटी, स्पोर्ट्स कंपटीशन एंजाइटी, एक्सेट्रा। फिजियोलॉजिकल वेरिएबल ले लीजिए, हमारे क्षेत्र में दुनिया भर के, रेस्टिंग हार्ट रेट, रेस्टिंग रेस्पिरेटरी रेट, वाइटल कैपेसिटी, पॉजिटिव ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी, नेगेटिव ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी, दुनिया भर के हैं। बायोमैकेनिकल वेरिएबल्स हो सकते हैं, बायोमेडिकल वेरिएबल्स हो सकते हैं, ब्लड काउंट्स हो सकती हैं, काउंट्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, एसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल्स। लेकिन एक जो हमने शुरुआत की थी, एक क्षेत्र इसका बच गया कि जो हमने शाब्दिक अर्थ की बात की थी, टू फाइंड आउट अगेन एंड अगेन, कि व्हाट इज द नीड टू फाइंड आउट अगेन एंड अगेन, उसको जानना भी अति आवश्यक है। कहां से शुरू हुई रिसर्च? प्रॉब्लम से। कहां समाप्त हुई? सॉल्यूशन पर। मान लीजिए कोई फर्स्ट क्लास में या नर्सरी क्लास में किसी बच्चे ने एडमिशन लिया, 4-5 दिन स्कूल गया है और उसके अध्यापक ने उसको सिखाया एडिशन, जमा जोड़, और 2-3 दिन बाद टेस्ट लिया, बेटा 50 + 50 = 50 जमा 50 क्या होंगे? तो आंसर होगा 100। उस बच्चे के लिए तो समस्या थी ना, 50 जमा 50, उस बच्चे के लिए तो बहुत भारी समस्या थी, क्योंकि 3-4-5 दिन स्कूल में गया और उसका सॉल्यूशन, उसका समाधान, उसका उत्तर उसने दिया 100। तो क्या हम में से कोई इससे अच्छा उत्तर दे सकता है? इससे अच्छा समाधान निकाल सकता है? 50 + 50 = 100। ब्रह्मा जी भी आएंगे तो भी कहेंगे हाँ भी 50 + 50 100 ही होंगे। तो रिसर्च में ऐसा क्यों कि सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम अगेन बिकम्स ए प्रॉब्लम, कि समस्या का समाधान फिर से नई समस्या को जन्म देता है। अनुसंधान या शोध में ऐसा क्यों? डियर स्टूडेंट्स, 50 + 50 = 100, these types of solutions are known as standard solution। इस प्रकार के समाधान कहलाते हैं स्तरीय समाधान।
but in the field of research there is no standard solution. When the standard solution is established, जब एक स्तरीय समाधान स्थापित हो गया, that becomes a pure research, that becomes a fundamental research, that becomes a theoretical research. तो कहानी की आगे बात करते हैं। तो अभी तक याद रहे, अभी तक हमने दो अर्थों की बात की। फर्स्ट, टू फाइंड आउट अगेन एंड अगेन इज नोन एज रिसर्च। दूसरी बात हमने की परिभाषा की, रिसर्च इज अ प्रोसेस वेयर एज एक्टिविटीज आर कैरिड आउट सिस्टमेटिकली टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। तीसरी बात हमने की कि व्हाट इज द ओरिजिन, ओरिजिन इज अ वेरिएबल। चौथी हमने बात की व्हाट इज द नीड टू फाइंड आउट अगेन एंड अगेन। आंसर इज, सिंस देयर इज नो स्टैंडर्ड आंसर इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। इस स्लाइड में, इस पहले भाग में केवल हमने एक मूलभूत बातों को जानने का प्रयास किया है रिसर्च की, क्योंकि हमें डेटा एनालिसिस को ठीक से जानना है। आई विल बी विद यू फॉर 2 सेशंस। इट्स माय फर्स्ट सेशन। टुमारो आल्सो आई विल बी विद यू ड्यूरिंग दिस टाइम। तो शुरू करते हैं सेकंड स्टेप से। दूसरे, सर मैं अपनी संतुष्टि के लिए पूछना चाहता हूं, मेरी आवाज वगैरह सब ठीक ठाक है? Yes, sir, it's clear, sir. ओके ठीक, थैंक यू। अब Sir, बात it's करते clear, हैं sir. टाइप्स। ओके थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। We all are from physical education sports pursuits, or we can say that we are from academic pursuits। हम सब शैक्षिक पेशे से जुड़े हैं और स्पेशली फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंसेस के क्षेत्र से जुड़े हैं। तो विभिन्न प्रकार के रिसर्चेज हम करते हैं। तो एक हमारा विषय एक मिश्रित विषय है और किसी एक प्रकार की अनुसंधान या आयोजित नहीं की जा सकती। हम करेंगे टाइप्स की बात, टाइप्स ऑफ रिसर्च। यदि जितने भी आपके पार्टिसिपेंट्स अभी हैं, यदि मैं किसी से पूछूं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, एक परिकल्पनापूर्ण एक प्रश्न कि क्लासिफाई योर ग्रुप, तो आप में से एक ने कहा यस सर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, दूसरे ने कहा नहीं सर मेल्स एंड फीमेल्स भी हो सकते हैं, तीसरे ने कहा नहीं सर बीपीएड एमपीएड पीएचडी एमफिल टीचर्स ये भी हो सकता है। इट मींस जहां टाइप्स की बात हो, जहां वर्गीकरण की बात हो, जहां क्लासिफिकेशन की बात हो, एक प्रकार का क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता, एक प्रकार का वर्गीकरण नहीं हो सकता। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बेसिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस आर पॉसिबल। विभिन्न आधारों के आधार पर विभिन्न प्रकार का वर्गीकरण हो सकता है। तो ये हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ मेथोडोलॉजी। प्रक्रिया के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च, प्रक्रिया के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। तो शुरू करते हैं। अगर अगेन आई रिपीट, दोबारा दोहराता हूं कि केवल यही वर्गीकरण नहीं है, यह वर्गीकरण किया जा रहा है मेथोडोलॉजी के आधार पर। अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग आधारों के आधार पर वर्गीकरण किए हैं, अलग अलग किताबों में, अलग अलग पुस्तकों में, अलग अलग लिटरेचर में आप अलग अलग प्रकार का वर्गीकरण पाएंगे। लेकिन यह एक ऐसा वर्गीकरण है, समझने में आसान है, और क्योंकि डेटा एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो इसमें अध्ययन के प्रकारों के, अध्ययन की प्रक्रियाओं के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेथोडोलॉजी द होल एरिया ऑफ रिसर्च इज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट पार्ट्स, कि विभिन्न 5 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट वन इज द केस स्टडी, हिंदी में हम कहेंगे वैयक्तिक अध्ययन। अमरावती में आपके यहाँ दुनिया भर की केस स्टडीज हुई हैं। केस स्टडीज क्या होती हैं? केवल अमरावती में, डीसीपीई में नहीं, देश के विभिन्न संस्थानों में केस स्टडीज बहुत आयोजित हुई हैं। Several researchers conducted the case studies। तो ये केस स्टडी है क्या? कोई कहेगा स्टडीज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल, व्यक्ति का अध्ययन, यूनिवर्सिटी का अध्ययन। तो एक लाइन में यदि हम परिभाषित करें तो स्टडीज बेस्ड ऑन एनी सोशल यूनिट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ केस स्टडीज। किसी भी सामाजिक इकाई का अध्ययन वैयक्तिक अध्ययन कहलाता है, किसी भी सामाजिक इकाई का अध्ययन। दैट एक लॉन्ग लिस्ट है, एक लंबी सूची है, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। इंडिविजुअल, कम्युनिटी, क्लास, अपरेटस, बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, दुनिया कुछ भी हो सकता है। और मैं आपसे पूछूं, अभी तक तो हमने बात की स्टडीज बेस्ड ऑन एनी सोशल यूनिट इज नोन एज केस स्टडी। तो क्या नालंदा विश्वविद्यालय पर केस स्टडी हो सकती है? आप में से कुछ कहेंगे हाँ, कुछ कहेंगे ना। यदि कहते हैं हाँ, नो वी कैन नॉट कंडक्ट। असेंशियली अनिवार्य है, द केस शुड बी अलाइव, केस वर्तमान में होना चाहिए।
अदरवाइज दैट विल बिकम हिस्टोरिकल रिसर्च, अन्यथा वो ऐतिहासिक अनुसंधान की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि केस स्टडी का और हिस्टोरिकल रिसर्च का करने का, आयोजित करने की विधि प्रक्रिया अलग अलग है। अब बात करते हैं दूसरे की, फिलोसफिकल स्टडीज, दर्शन अनुसंधान। फिलोसफिकल स्टडीज, दर्शन अनुसंधान। व्हाट डू यू मीन बाय फिलोसफिकल स्टडीज? उससे पहले हम फिलोसफी की बात कर लें। फिलोसफिकल रिसर्चेस की तो बाद में बात करें, पहले व्हाट डू यू मीन बाय फिलोसफी। जैसे केस स्टडी को हमने कहा था, स्टडीज बेस्ड ऑन एनी सोशल यूनिट, किसी भी सामाजिक इकाई का अध्ययन। उसी प्रकार से यदि एक वाक्य में परिभाषित करें कि फिलोसफिकल स्टडीज, दर्शन अनुसंधान या दर्शन संबंधी अध्ययन कैसे होंगे, तो उसके लिए हम पहले फिलोसफी की बात करते हैं। फिलोसफी की, आई एम फ्रॉम हरियाणा, तो एक कहावत सी है, एक व्यंग्यात्मक एग्जाम्पल है। हरियाणा में दो कोई आदमी बात करते हैं, एक दूसरे की बात बड़ी जटिल सी हो, समझ में नहीं आए, तो हम कहते हैं कि भाई क्यों फिलोसफी झाड़ रहा है। इट मीन्स समथिंग वेरी डिफिकल्ट इन नेचर, कि कुछ ऐसा जो प्रकृति से बहुत ही जटिल, उलझा पुलझा सा हो। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है क्या फिलोसफी? आप में से मैं भी देख रहा था, तो आप में स्टूडेंट्स काफी बैठे हैं, तो काफी स्टूडेंट्स है, दो साथी एक साथ बैठे हैं, और मैं उसके साथी से पूछता हूँ कि भाई आपके साथी ने शर्ट कैसी पहनी है, तो साथी स्वाभाविक है कहेगा अच्छा। पीछे उसका और एक साथी बैठा है, वो कह रहा है अच्छी नहीं है, झूठ बोल रहा है, यू आर टेलिंग लाई, अच्छी नहीं बहुत अच्छी है। तीसरा कहता है तुम दोनों झूठे, अच्छी भी नहीं है बहुत अच्छी भी नहीं, ये तो बहुत ही बहुत अच्छी है। और मैं कहता हूं ना तो ये अच्छी है, ना ये बहुत अच्छी है, ना ये बहुत बहुत अच्छी है, दिस इज अल्टीमेट। अच्छे से बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छे से बहुत बहुत अच्छा हो सकता है, इसकी डिग्री भी बढ़ सकती है। जहां अल्टीमेट शब्द है, अल्टीमेट मींस दैट इज लास्ट, नथिंग बियॉन्ड दैट, उससे परे कुछ नहीं। तो फिलॉसफी इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अल्टीमेट विजन, ऐसी दूरदर्शिता और दृष्टिकोण स्थापित कर देना जो आज के दिन अल्टीमेट है, दैट इज नोन एज फिलॉसफी। तो फिलोसफिकल रिसर्चेस क्या होंगे? कि फिलोसफिकल रिसर्चेस मींस स्टडीज बेस्ड ऑन विजन, थॉट्स नहीं, थॉट्स आर इंडिविजुअलाइज्ड इन नेचर, तो स्टडीज बेस्ड ऑन विजन। लेकिन कुछ प्रगाढ़ विद्वानों ने, प्रगाढ़ विदुषियों ने कुछ तीन शब्द और जोड़ दिए, स्टडीज बेस्ड ऑन विजन, स्टडीज बेस्ड ऑन व्यूज, स्टडीज बेस्ड ऑन आइडियाज, स्टडीज बेस्ड ऑन कंसेप्ट। कुल मिलाकर बात वही है, कोई खास फर्क, कोई बहुत ज्यादा अंतर चारों शब्दों में नहीं है। कुल मिलाकर दूरदर्शिता और दृष्टिकोण पर आधारित कोई भी अध्ययन होगा वह कहलाएगा फिलोसफिकल रिसर्च। तो फिलोसफिकल रिसर्च फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत कम मिलेंगी, मुझे तो आज तक कोई ऐसी स्टडी दिखी नहीं, लेकिन केस स्टडीज की भरमार है। तीसरे की बात करते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च। यू विल फाइंड हिस्टोरिकल रिसर्च इज ट्रू इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यह भी आपको मिलेंगी शरीर शिक्षा और खेल के क्षेत्र में। हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक अनुसंधान। आप कहेंगे कि सर सिंपल सी बात है, इट्स क्लियर, स्टडीज बेस्ड ऑन पास्ट इज नोन एज हिस्ट्री। नो लेडीज एंड जेंटलमैन, एवरी पास्ट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज हिस्ट्री। प्रत्येक भूतकाल इतिहास की श्रेणी में नहीं आता, प्रत्येक भूतकाल इतिहास की। लादेन था, उसने कितने लोगों को नर्स को मारा था, क्या क्या एक घटनाएं घटित की थी, दैट इज ए पास्ट पार्ट ऑफ हिस्ट्री। लेकिन वो ब्रेकफास्ट में कितनी चपाती खाता था, कौन सी सब्जी खाया करता था, वो हिस्ट्री का पार्ट नहीं है। तो कुल मिलाकर स्टडीज बेस्ड ऑन मीनिंगफुल पास्ट। एज ए रिसर्चर, अनुसंधान के रूप में वी हैव टू आइडेंटिफाई, हमें पहचान करनी है कि वेदर वी आर गोइंग टू कंडक्ट ए स्टडी बाय टेकिंग ए मीनिंगफुल पास्ट और मीनिंगलेस पास्ट। तो studies based on meaningful past comes under the category of historical researches. Out of 5 different classes, we have discussed about the 3. That is case studies based on social unit, philosophical based on vision, views, ideas, concepts, historical based on only meaningful past. अब जो सबसे अधिक हमारे क्षेत्र में आयोजित की जाती है, सर्वे स्टडीज, सर्वेक्षण अध्ययन। Ladies and gentlemen, case studies are independent in nature, philosophical studies are independent in nature, historical researches are independent in nature, means we have to adopt only one methodology। क्योंकि केस स्टडी आप करें, मैं करें, तीसरा चौथा कोई भी करे, प्रक्रिया तो वही होगी ना।
फिलोसफिकल की भी प्रक्रिया वही होगी, हिस्टोरिकल की भी प्रक्रिया होगी वही होगी, बट सर्वे स्टडीज में बी कंडक्टेड बाय अडॉप्टिंग डिफरेंट सब मेथोडोलॉजीज। इसके उप प्रक्रियाएं हैं। सर्वेक्षण अध्ययन विभिन्न उप प्रक्रियाओं के द्वारा किया जा सकता, कोई एक सेट पैटर्न नहीं है। तो सबकी बात करते हैं। पहले तो अर्थ को जान लें। तो स्टडीज बेस्ड ऑन प्रेजेंट स्टेटस, क्योंकि हम वर्तमान से ही आंकड़े एकत्रित करते हैं किसी भी सर्वेक्षण में। कोई भी सर्वेक्षण यदि हम करते हैं तो स्टडीज बेस्ड ऑन प्रेजेंट इज नोन एज सर्वे स्टडी। फर्स्ट टाइप ऑफ सर्वे कंपैरेटिव सर्वेज, लाइब्रेरीज भरी पड़ी हैं। डीसीपी की बात करें, एलएनआईपी की बात करें, किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें, स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात करें, सबसे अधिक तो आपको कंपैरेटिव स्टडीज मिलेंगी। तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरिजन ऑफ द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ रूरल एंड अर्बन, कंपैरिजन ऑफ द मेल्स एंड फीमेल्स, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट गेम्स, यानी दो या दो से अधिक विभिन्न समूहों को लेकर वेरिएबल्स के साथ हम उनकी तुलना कर लेते हैं बाय अडॉप्टिंग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स, मे बी इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, मे बी वन वे एनोवा, मे बी टू वे एनोवा, दुनिया भर की टेक्निक्स हैं, उनकी बात करेंगे कैसे कि हाउ टू कंडक्ट कंपैरेटिव स्टडीज दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सर्वे स्टडीज। तो सबसे अधिक आप मेरी बात से सहमत होंगे, तुलनात्मक अध्ययन दुनिया भर के हैं। नेक्स्ट वन इज रिलेशनशिप स्टडीज, सह संबंधात्मक अध्ययन। तो ये रिलेशनशिप स्टडीज क्या है? सह संबंधात्मक कंपैरिजन कहाँ होगा? समूह के बीच में। उदाहरण हो चुका महिलाओं पुरुषों में, विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों में, विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में हो सकता है, विभिन्न स्टेट्स में हो सकता है, विभिन्न कंट्रीज में हो सकता है। लेकिन रिलेशनशिप यानी वी कंपेयर बिटवीन ग्रुप्स एंड वी एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, रिलेशनशिप बिटवीन basketball performance and motor qualities, relationship between risk of cancer and lifestyle, जीवन शैली और कैंसर के जोखिम के बीच सहसंबंध, यानी we establish the relationship between variables, maybe between two variables and maybe more among more than two variables। तो कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स में जो बात की थी, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, वन वे एनोवा, टू वे एनोवा एक्सेट्रा, इन द सेम वे कि we can conduct these relationship studies by applying Pearson's product moment method of correlation, partial correlation, multiple correlation। ये दुनिया भर की टेक्निक्स हैं, कुछ चर्चा करेंगे। तो तीसरा है considered as the best type of surveys, prediction studies, prediction भविष्यवाणी। prediction का अर्थ तो, लेकिन मेरी बात से आप सहमत होंगे कि एज ए रिसर्चर, एक अनुसंधानकर्ता के रूप में हम भविष्यवाणी नहीं करते, हम अनुमान लगाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ द वर्ड प्रिडिक्शन द एप्रोप्रिएट वर्ड इज एस्टिमेशन। तो प्रिडिक्शन स्टडीज कहें, एस्टिमेशन स्टडीज कहें, बात एक ही है, लेकिन कुछ प्रगाढ़ विद्वानों ने कुछ और शब्द भी जोड़ दिए हैं। प्रोग्नोस्टिकेशन स्टडीज, प्रोफेसी स्टडीज, तो ये चार विभिन्न नामों से जानी जाती है। प्रिडिक्शन स्टडीज, एस्टिमेशन स्टडीज, प्रोग्नोस्टिकेशन स्टडीज और प्रोफेसी स्टडीज। तो कैसे ये होती क्या है? अभी तक तो बात ही कंसिडर्ड एज बेस्ट टाइप ऑफ सर्विस बहुत मिलेंगे आपको, आपके यहाँ डीसीपी में भी, डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन अमरावती में भी दुनिया भर के प्रिडिक्शन और एस्टिमेशन स्टडीज आयोजित की जा चुकी हैं, और देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में भी आयोजित की जा चुकी हैं। तो कैसे आयोजित करते हैं और किन विधियों के द्वारा आयोजित करते हैं, किन स्टैटिस्टिकल टूल्स के? छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए, एक लेमैन की भाषा में। एक महिला ने बेटे को जन्म दिया, और हम ऐसे मॉडर्न और नॉलेज एरा में, ऐसे युग में रह रहे हैं जब बेटे का महत्व तो आज भी बहुत, समानता तो आज तक भी नहीं हो पाई है। तो उस परिवार में बड़ा एक खुशी का माहौल है, सब प्रफुल्लित हैं क्योंकि बेटे को जन्म दिया। 4-5 दिन का बेटा है, 4-5 दिन पहले जन्म हुआ, जश्न का माहौल है, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हैं, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी सब आए हुए। और उस महिला जिसने बेटे को जन्म दिया है, उसके बगल में मकान था, उसकी एक सहेली भी आई हुई है। वो बैठी है, सारे रिश्तेदारों को देख रही है, जश्न मनाया जा रहा है। वो घूर के कभी उसकी माँ को देखती है, कभी बेटा लेटा हुआ बगल में उसको देखती है, कभी रिश्तेदारों को देखती है, और मुस्कुरा के कहती है अपने मित्र को, मीन्स बेटे की माँ को, कि यू आर वेरी लकी, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। तो बेटे की माँ ने पूछा, व्हाई आई एम लकी, कि मैं भाग्यशाली क्यों?
इसलिए भाग्यशाली हो कि आपका बेटा बड़ा होकर 6.5 फुट का बनेगा। अभी तो 4 दिन का है। ऐसी कौन सी अंतर्यामी थी? शी वॉज इंटेलिजेंट लेडी। दादा दादी नाना नानी मामा मामी सब लंबे हैं तो लंबा होना है, कौन सी नई बात है? शी प्रिडिक्टेड अननोन ऑन द बेसिस ऑफ नोन। ज्ञात के आधार पर अज्ञात का अनुमान लगा दिया। तो फिजिकल एजुकेशन में, स्पोर्ट्स साइंसेज में, प्रिडिक्शन ऑफ द बास्केटबॉल परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ एंथ्रोपोमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिडिक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ लाइफस्टाइल, जीवन शैली के आधार पर रक्तचाप का अनुमान कि ऐसी जीवन शैली है तो इतना रक्तचाप होना, क्योंकि संबंध है ना दोनों के बीच। तो प्रिडिक्शन स्टडीज मींस वी प्रिडिक्ट अननोन ऑन द बेसिस ऑफ नोन। दुनिया भर की है, सभी को सम्मिलित करना इस सीमित समय में संभव नहीं है। एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आप देखे होंगे, प्रोफाइल ऑफ इंडियन जूडोकाज, प्रोफाइल ऑफ इंडियन हॉकी प्लेयर्स, प्रोफाइल स्टडीज हैं। और दुनिया भर के when we characterize by using measures of central tendency and measures of variability by using mean, median, mode, mean deviation, quartile deviation, standard deviation, range वगैरह वगैरह। तो ये अब बात करते हैं अंतिम प्रकार की एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, प्रायोगिक अध्ययन, कंसीडर्ड एज ए बेस्ट टाइप ऑफ रिसर्च। एक लेमैन की भाषा में तो हम यही कहेंगे, बेस्ड ऑन फ्यूचर, भविष्य बताएगा ना, जो एक प्रयोग होगा वो भविष्य बताएगा क्या रिजल्ट होंगे, क्या परिणाम होंगे। लेकिन ये तो लेमैन की भाषा में है, लेकिन हम एज ए रिसर्चर, एक अनुसंधानकर्ता के की भाषा में इसको जानने का प्रयास करेंगे। अनुसंधानकर्ता की भाषा में इसको क्या कहेंगे? लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक उदाहरण लेकर चलते हैं। इफेक्ट ऑफ मॉर्निंग वॉक ऑन ब्लड प्रेशर, सुबह की सैर का ब्लड प्रेशर पर प्रभाव, सुबह की सैर का रक्तचाप पर प्रभाव। डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के एक शोधार्थी ने अध्ययन लिया और उसने 1 महीने मॉर्निंग वॉक करवाई, उसका प्री टेस्ट लिया, पोस्ट टेस्ट लिया, डिफरेंस देखा, डिफरेंस आया था तो कह दिया कि हाँ फर्क पड़ता है, नहीं तो अंतर नहीं आता है, इतनी सी बात। इन दिस हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल है इफेक्ट ऑफ मॉर्निंग वॉक ऑन ब्लड प्रेशर, इसमें ट्रीटमेंट इज कंसीडर्ड एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर है मॉर्निंग वॉक जिसका प्रभाव देख रहे हैं, इंटरवीनिंग वेरिएबल। और दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल जो आश्रित चर कहलाता है जिस पर प्रभाव देखा जा रहा है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मॉर्निंग वॉक, डिपेंडेंट वेरिएबल है ब्लड प्रेशर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। Investigators' interest is to find out the change in dependent variable only due to independent variable. अनुसंधानकर्ता का प्रयास है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई परिवर्तन केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण आने वाले को देखना, पर ऐसा संभव नहीं है। कुछ एक्सटेनियस वेरिएबल को बाह्य कारक भी है, डेली रूटीन, हेरिडिटी, फूड हैबिट्स, वो भी अपना प्रभाव साथ साथ छोड़ते हैं। लेकिन हमारा तो उद्देश्य है कि केवल मॉर्निंग वॉक का प्रभाव देखना। तो ओनली ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो प्रभाव पड़ा, दैट इज नोन एज ट्रीटमेंट वेरिएंस, चेंज ड्यू टू ट्रीटमेंट। और इसके अतिरिक्त कोई दूसरे कारकों के कारण प्रभाव पड़ा, दैट इज नोन एज एरर वेरिएंस, एरर वेरिएंस। तो एक लाइन में ध्यान दीजिए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किस पर आधारित है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट वेरिएंस एंड मिनिमाइजेशन ऑफ एरर वेरिएंस। इसमें प्रयास किया जाता है कि मैक्सिमाइज कर दें ट्रीटमेंट वेरिएंस को एंड एरर वेरिएंस को कम से कम कर दें। तो क्लियर हो गया कि एरर वेरिएंस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, एरर वेरिएंस हटाया जा ही नहीं सकता, ओनली वी कैन मिनिमाइज द एरर वेरिएंस। उसी कारणवश, ड्यू टू दिस रीजन, इसी कारणवश लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का आया ना कि इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन वी कंडक्ट द स्टडीज एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इट मींस वी आर 95% कॉन्फिडेंट एंड वी हैव 5% सिग्निफिकेंस लेवल। लेकिन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज को तो कि डिजाइन को और स्टडीज को समझने के लिए तो घंटों चाहिए। अभी तो हमने एक अर्थ को जाना है कि अच्छा कि इसको मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा ट्रीटमेंट वेरिएंस का और मिनिमाइजेशन कैसे होगा एरर वेरिएंस का। एक 5 मिनट का काम नहीं है, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। अब बात करते हैं स्टेप्स की। देखिए हम अभी 2 क्षेत्रों की बात कर चुके हैं थोड़ा स्पीड के साथ, क्योंकि हमारा पर्पज है कि डेटा एनालिसिस कैसे करें, उसके लिए हमें विभिन्न प्रकार के अनुसंधानों की विधियों का ज्ञान होना अति आवश्यक था। तो हमने 2 क्षेत्रों की बात की है कि हमने कंसेप्ट ऑफ रिसर्च की अनुसंधान क्या है वास्तव में
उसको जानने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि मे बी आप में से कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल नए हों अनुसंधान के क्षेत्र में, इसलिए बात की। दूसरी हमने बात की क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च, लेकिन केवल एक क्लासिफिकेशन की बात की हमने कि ऑन द बेसिस ऑफ मेथोडोलॉजी, 5 भागों की। इसका अर्थ ये नहीं है, कुछ ने क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव के रूप में भी एक्सप्लेन किया है, कुछ ने बेसिक अप्लाइड और एक्शन रिसर्च के, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं स्टेप्स कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के चरण। अनुसंधान के चरण मीन्स पहला स्टेप्स ऑफ रिसर्च, पहला है फर्स्ट स्टेप शुड बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। कुछ किताबों में आप देखेंगे सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, तो मेरा भी मानना यही है कि फर्स्ट स्टेप शुड बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। मैं भी उन अनुसंधानकर्ताओं को, उन अनुसंधान के विद्वानों का से सहमत हूँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम पहला स्टेप होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो समस्या है नहीं, आप हम समस्या समझ लें तो डायरेक्ट सेलेक्ट करना ठीक नहीं, पहले आइडेंटिफाई करें, उसको पहचान करें समस्या की। तो व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम क्या है? हम एक एग्जाम इन स्टेप्स की बात करें। दूसरा स्टेप फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कलेक्शन ऑफ डेटा, लेकिन हम तो पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र की बात करें हम, फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र की, तो फिजिकल एजुकेशन का क्षेत्र होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है? एक रूपता अनेकता है, तो आप कहेंगे सर हेट्रोजीनियस है। इसमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी है, इसमें बायोमैकेनिक्स भी है। तो मेरा अगला क्वेश्चन होगा कि क्या हेट्रोजीनियस फील्ड को लेकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रॉब्लम को? नहीं कर सकते। वी हैव टू रिड्यूस द हेट्रोजेनिटी, कि मेरा इंटरेस्ट केवल साइकोलॉजी में है, तो साइकोलॉजी जिसको कि पूरे फिजिकल एजुकेशन का छोटा सा क्षेत्र है, वो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस? आप कहेंगे सर वो भी हेट्रोजीनियस है। उसमें से भी आप कहेंगे मुझे तो लर्निंग में इंटरेस्ट है, लर्निंग का लिया, और मोटिवेशन। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम इज नथिंग, रिड्यूसिंग हेट्रोजेनिटी ऑफ एनी सब्जेक्ट इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। कि किसी भी विषय की हेट्रोजेनिटी को रिड्यूस कर देना ही आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम है। रिड्यूसिंग हेट्रोजेनिटी ऑफ एनी सब्जेक्ट इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। आगे बात करते हैं। सेकंड स्टेप शुड बी फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का निर्माण करें। तो हम कहते हैं कि हाइपोथेसिस कि tentative guess is known as hypothesis. No, every assumption cannot be considered as hypothesis. इसमें एक ही लाइन हम याद करें, only intelligent assumptions are considered as hypothesis. उसके बाद हम डेटा कलेक्शन करना चाहिए, लेकिन मैडम और सर ने जो मुझे आदेशित किया था एनालिसिस ऑफ डेटा के इस स्टेप के लिए, तो अभी तक तो मैंने एक आधार बनाने का प्रयास किया था। अब मेरी कहानी अब शुरू होती है, हाउ टू एनालाइज डेटा प्रैक्टिकली। आई विल डेमोस्ट्रेट एवरी टेक्निक। आपका कोऑपरेशन भी चाहिए। कहानी शुरू करते हैं एनालिसिस ऑफ डेटा, चौथा भाग, जिसके लिए मुझे कहा गया है फॉर डेटा एनालिसिस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड। हमें सांख्यिकीय तकनीक चाहिए, और इन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को, इन सांख्यिकीय तकनीकों को हम कहते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स मींस अनुमानिक सांख्यिकी। हम कहते हैं इसको अनुमानिक सांख्यिकी। दीज आर नोन एज अनुमानिक सांख्यिकी, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि वी यूज दीज स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टू ड्रॉ इन्फरेंसेस, क्योंकि हम इन सांख्यिकी तकनीकों को एक निष्कर्ष और अनुमान लगाने के लिए करते हैं। ऑल द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। एक एक की चर्चा करते हैं। पैरामेट्रिक, हम आंख बंद करके पैरामेट्रिक लगा देते हैं, पैरामेट्रिक को अप्लाई करते हैं टू एनालाइज डेटा। हम भूल जाते हैं देयर आर सम assumptions and these assumptions should be fulfilled before applying parametric statistics। कि पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स को लगाने के लिए कुछ assumption फुलफिल होनी चाहिए, कुछ मान्यताओं की पूर्ति होनी चाहिए। जब तक कि इन मान्यताओं की पूर्ति नहीं होगी, we cannot apply parametric statistics directly। then the question arises, प्रश्न उठा, what are these assumptions की ये मान्यताएं कौन कौन सी हैं? ये मान्यताएं, फर्स्ट वन इज द डेटा शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आंकड़े नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। नॉर्मल कर्व आप पढ़ते आए हैं स्टैटिस्टिक्स में कि विद मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द स्कोर्स एट द सेंटर एंड द फ्रीक्वेंसी टेपर्स एट बोथ द एंड्स।
ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी लॉ को फॉलो करते हो आपके आंकड़े जिनका आप विश्लेषण करने वाले हैं, जो आपने एकत्रित किए हैं। सेकंड assumption is the scale of measurement should be at least interval और रेशियो स्केल। जो आंकड़े आप एकत्रित कर रहे हैं, जिस वेरिएबल के आंकड़े आप एकत्रित कर रहे हैं, वो कम से कम इंटरवल या रेशियो स्केल में होने चाहिए, अन्यथा हम पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स नहीं लगा सकते। तो पहले स्केल ऑफ मेजरमेंट की बात कर लें कि ओनली देयर आर 4, जबकि नॉन पैरामेट्रिक किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में और किसी भी स्केल ऑफ मेजरमेंट में लग सकते हैं। अब स्केल ऑफ मेजरमेंट हमारे पास केवल 3 है। पहला है नॉमिनल स्केल, when the available data is in frequency or counts, discrete series, whole number में हो, number of males, number of females, number of agree, number of disagree। अब मैं पूछूं कि नंबर ऑफ मेल्स इन योर ग्रुप, तो आप ये तो नहीं कहेंगे 5.2 मेल, आइदर 5 और 6, दैट विल बी होल नंबर, दैट विल बी डिस्क्रीट सीरीज, दैट विल बी अ नंबर। तो व्हेन वी हैव द डेटा एंड फ्रीक्वेंसी एंड काउंट्स, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉमिनल स्केल। नेक्स्ट वन इज ऑर्डिनल स्केल, when we cannot measure, when we are unable to measure in a numeric value, only we can measure in a order, that comes under the category of ordinal scale। एक शॉर्ट पुटर है, शॉर्ट पुट की प्रैक्टिस कर रहा था, कमर में जर्क लग गया, कोच ने डॉक्टर के पास भेजा। डॉक्टर ने पूछा, बेटा व्हाट इज द सीवियरिटी ऑफ पेन, आपके दर्द का स्तर क्या है? तो प्लेयर विल नॉट, शॉर्ट पुटर विल नॉट एक्सप्रेस, शॉर्ट पुटर ये नहीं कहेगा सर आई हैव 3 kg पेन, 5 सेंटीमीटर पेन। ही विल एक्सप्रेस इन ए ऑर्डर, सर आई हैव वेरी हाई पेन, मीडियम पेन, लो पेन एक्सेट्रा। तो पेन, मेजरमेंट ऑफ ए पेन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑर्डिनल स्केल। अब मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ योर फ्रेंड, आपकी किसी से दोस्ती हुई और मैं पूछूं कितना सुंदर आपका दोस्त, आप ये तो नहीं कहेंगे कि 2 टन ब्यूटी रखता है, आप कहेंगे he has excellent beauty or above average beauty, below average beauty। So these are the examples of ordinal scale, but in nominal scale and ordinal scale we cannot apply parametric statistics। वो हमारी बाध्यता है, हमारे limitations है, we have to apply non parametric statistics only। Third scale of measurement is interval scale। Interval scale means having same intervals in between but has no fixed zero। बीच में समान अंतराल है लेकिन फिक्स जीरो नहीं है। हम बात करते हैं एग्रेशन की। आप 2 साथी हैं, एक का एग्रेशन लेवल 20, एक का एग्रेशन लेवल 40 है, तो आप कह सकते हैं जस्ट डबल एग्रेशन है, जस्ट डबल गुस्से वाला है। नो, वी कैन नॉट से, एग्रेशन हैज नो फिक्स जीरो। यदि एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, एक परिकल्पनापूर्ण उदाहरण, किसी बच्चे की हाइट 3 फुट है, किसी बच्चे की हाइट 6 फुट है, हम कह सकते हैं जस्ट डबल लंबा है, क्योंकि हाइट हैज ए फिक्स जीरो। तो एग्रेशन इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरवल स्केल एंड हाइट इज एन एग्जांपल ऑफ रेशियो स्केल। रेशियो स्केल मींस हैविंग सेम इंटरवल्स इन बिटवीन बट हैज ए फिक्स जीरो आल्सो। तो कुल मिलाकर हमने बात क्यों की, क्योंकि इन 4 स्केल ऑफ मेजरमेंट्स में से आउट ऑफ दीज 4 स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स, दैट इज नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल, वी कैन अप्लाई पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स ओनली इन केस ऑफ द लास्ट 2, that is third and fourth, interval and ratio scale, but non-parametric can be applied in any distribution as well as in any scale of measurement। तो क्या स्केल ऑफ मेजरमेंट को चेक करने के लिए हमें कोई टूल चाहिए? नो। हर अनुसंधानकर्ता में, हर शोधार्थी में इतना ज्ञान और विवेक विकसित हो जाता है कि आंकड़ों की प्रकृति से वो जान लेता है कि कौन सा स्केल ऑफ मेजरमेंट है। बट टू टेस्ट द डेट नॉर्मलिटी वी हैव टू अप्लाई टेस्ट। लेकिन नॉर्मलिटी को चेक करने के लिए हमें किसी ना किसी टेस्ट की आवश्यकता होती है। तो अगला बात हमें करनी चाहिए टेस्टिंग नॉर्मलिटी। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा वेरिएबल को जान लें कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल को भी जान लें, हम किस किस प्रकार के वेरिएबल हो सकते हैं। अगेन आई रिपीट, हमने क्लासिफिकेशन को की बात की थी, तो हमने एक ही आधार था हमारा क्लासिफिकेशन का ऑन द बेसिस ऑफ मेथोडोलॉजी। उसी प्रकार से टाइप ऑफ वेरिएबल की बात भी करें तो अलग अलग ऑथर्स ने वेरिएबल्स का क्लासिफिकेशन भी अलग अलग किया है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ए कॉजल मॉडल एक, और एक दूसरा है कॉजल मॉडल के आधार पर। यदि हम पूरे वेरिएबल्स का वर्गीकरण करें
तो पहला होगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज नोन एज ए ट्रीटमेंट, दैट इज नोन एज, जो कि एक ट्रीटमेंट का काम करता है। हमारा जो परिकल्पनापूर्ण उदाहरण था अभी थोड़ी देर पहले, इफेक्ट ऑफ मॉर्निंग वॉक ऑन ब्लड प्रेशर, उस उदाहरण में इंडिपेंडेंट वेरिएबल था हमारा मॉर्निंग वॉक। दूसरा वेरिएबल है कंफाउंडिंग वेरिएबल, जो कि एरर वेरिएंस को बढ़ाते हैं। जो हमारा उद्देश्य होता है एरर वेरिएंस को कम करना। कंफाउंडिंग, कि जो इन्वेस्टिगेटर का इंटरेस्ट नहीं रहता इनका प्रभाव देखना, लेकिन साथ साथ अपना प्रभाव छोड़ते हैं, ये दो प्रकार के हो सकते हैं, इंटरवेनिंग बियॉन्ड द कंट्रोल एंड एक्सटेनियस, का कुछ हद तक हम नियंत्रित कर सकते हैं। और अगला है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस हाइपोथेटिकल एग्जांपल में जिसकी चर्चा हुई थी, इफेक्ट ऑफ मॉर्निंग वॉक ऑन ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। कॉजल मॉडल, अगेन आई रिपीट, कॉजल मॉडल में this causal model is applicable to experimental searches. If we want to conduct experimental searches, we will have independent variable, confounding variable also in the form of intervening variables and external variable, and the next variable will be dependent. एक क्लासिफिकेशन की ओर बात करते हैं जिसका आंशिक रूप से, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं थोड़ी देर पहले, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। नॉमिनल स्केल बात हो चुकी है फ्रीक्वेंसी एंड काउंट्स में, लेकिन वो भी कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं, डाइकोटोमस भी हो सकते हैं। अभी तक तो हमने कांस्टेंट्स की बात की, अब डाइकोटोमस। डाइकोटोमस मींस हैविंग टू एंड्स, टू ऑप्शंस, मींस रिजल्ट पास और फेल, हैविंग टू एंड्स। नेक्स्ट हो सकता है पॉलिटोमीज हो सकती है, ऑर्डिनल स्केल की बात हो सकती है, हो चुकी है, इंटरवल स्केल की बात हो चुकी है, रेशियो स्केल की बात। अब प्रैक्टिकल पार्ट शुरू होता है, डिस्कशन करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकली इसको एक डेमोन्स्ट्रेशन मैं दूंगा, हम कर सकते हैं इसका। तो हाउ टू चेक नॉर्मलिटी, यानी कि पहला स्टेप अनुसंधान। यदि आंकड़ों के विश्लेषण की बात कर रहे हैं, यदि आंकड़ों के विश्लेषण की यदि हम बात करते हैं, तो किसी भी अनुसंधानकर्ता के सामने पहला स्टेप होना चाहिए चेकिंग नॉर्मलिटी ऑफ डेटा। क्यों? क्योंकि हमें डिसाइड करना है कि हमें पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स लगानी है या नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स लगानी है। तो हमारे पास तीन विधियां उपलब्ध हैं नॉर्मलिटी चेक करने के लिए। फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, सेकंड वन इज ए ग्राफिकल मेथड, एंड थर्ड वन इज ए फॉर्मल टेस्ट, जिसका कोई दूसरा काम नहीं, जिसका काम केवल नॉर्मलिटी को चेक करना है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा काम इसका नहीं है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का नाम आते ही हमारे सामने पिक्चर आती है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की और मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी की, मींस मीन, मीडियन, मोड, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस वगैरह वगैरह। हम जैसे हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर आउटपुट देता है, हम थीसिस में यूं का यूं कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, और अधिकतर संख्याएं हमारे लिए यूजलेस है। मोस्ट ऑफ द मेजर्स आर यूजलेस फॉर अस। यदि हमारा उद्देश्य नॉर्मलिटी को चेक करना है, तो आउट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्टिव मेजर्स वी रिक्वायर ओनली 4। चौथे डिजिट की, चौथी वैल्यू की, चौथे डेटा की, चौथे ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता ही नहीं है, चार के अलावा आवश्यकता ही नहीं है। तो स्क्यूनेस चाहिए हमें, स्टैंडर्ड एरर स्क्यूनेस चाहिए हमें, क्यूटोसिस चाहिए हमें, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ क्यूटोसिस चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्क्यूनेस। स्क्यूनेस मेजर्स द सिमेट्रिसिटी ऑफ द कर्व, और साथ साथ हमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्क्यूनेस भी चाहिए। स्क्यूनेस मेजर्स द फ्लैटनेस ऑफ द नॉर्मल कर्व, फ्लैटनेस ऑफ द कर्व, और उसके साथ साथ हमें चाहिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ क्यूटोसिस। स्क्यूनेस की बात हो चुकी है, सिमेट्रिसिटी मेजर करता है, क्यूटोसिस की बात हो चुकी है फ्लैटनेस को। फ्लैटनेस भी ऑप्टिमल होनी चाहिए, सिमेट्रिसिटी भी प्रेजेंट होनी चाहिए, और ये मेजर करेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्क्यूनेस और स्टैंडर्ड एरर ऑफ क्यूटोसिस से। तो देन क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड एरर? की स्टैंडर्ड एरर क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड एरर? लेमैन की भाषा में समझते हैं। मैं पूछता हूं कि आपके दोस्त कैसे हैं, तो आप कहेंगे कि अच्छे हैं, स्वाभाविक दोस्त है तो भी अच्छा कहेंगे। तो मेरा अगला प्रश्न कि क्या आपके दोस्त में कोई बुराइयां नहीं है, तो आप कहेंगे हाँ सर थोड़ी बहुत बुराइयां तो, लेकिन फिर भी अच्छे हैं। क्योंकि हमारे समाज ने काल्पनिक रेखा फिक्स कर दी, उससे कम बुराइयां हैं तो एक्सेप्टेबल है, उनको स्वीकार किया जा सकता है, अच्छे हैं। जिस दिन उससे अधिक बुराइयां होंगी हम कहेंगे भाई बहुत अच्छे आदमी नहीं है, बच के रहना है, इनसे दूर रहना।
मीन्स एवरी इंडिविजुअल इज बाउंड टू हैव सम एरर, प्रत्येक व्यक्ति विशेष की बाध्यता है कि उसमें त्रुटियां होंगी. द एक्सेप्टेबल एरर्स आर नोन एज स्टैंडर्ड एरर्स. इन द सेम वे एवरी स्टैटिस्टिकल टेक्निक इज बाउंड टू हैव सम एरर. कितना एक्सेप्टेंस रेंज है हमारा, कहां तक स्वीकार्य है, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड एरर. तो स्क्यूनेस की वैल्यू उसके स्टैंडर्ड एरर से कम, या छोड़िए एक थंब रूल रखिए, the value of skewness should be less than 1 and the value of kurtosis should be less than 1. यदि है तो इसका मतलब नॉर्मेलिटी है. सेकंड वन इज ग्राफिकल मेथड, जिसको कहा जाता है क्यू क्यू प्लॉट. ग्राफ में क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, और एक स्टैंडर्ड लाइन इज जनरेटेड बाय द ग्राफ, और एक ग्राफ के द्वारा एक स्टैंडर्ड लाइन जनरेट की जाती है. ऑल द स्कोर्स शुड बी स्कैटर्ड टू दिस नियर लाइन, दिस स्टैंडर्ड लाइन. यदि उसके आसपास स्कैटर्ड है, इट मींस नॉर्मेलिटी इज देयर, otherwise there is no normality. I will demonstrate. Next one is formal test. बता चुका हूं, जिनका काम केवल नॉर्मेलिटी को चेक करना है. देयर इज ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ फॉर्मल टेस्ट, लेकिन 4 की बात करते हैं मैं, जो कि प्रचलन में है. KST, कोल्मोगोरोव स्मिर्नोव टेस्ट. अगेन आई रिपीट, कोल्मोगोरोव स्मिर्नोव टेस्ट. दूसरा है SWT, शापिरो विल्क टेस्ट. ADT, एंडरसन डार्लिंग टेस्ट. RJT, रेयान जॉयनर टेस्ट. देयर आर 4 टेस्ट्स. KST, कोल्मोगोरोव स्मिर्नोव टेस्ट, शापिरो विल्क टेस्ट, एंडरसन डार्लिंग टेस्ट, रेयान जॉयनर टेस्ट. लेकिन जो SPSS है, स्टैटिस्टिकल जो पैकेज है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, इन 4 टेस्ट में से वो केवल पहले 2 टेस्ट की सुविधा प्रदान करता है. KST की, कोल्मोगोरोव स्मिर्नोव टेस्ट की, और शापिरो विल्क टेस्ट की. ADT मींस एंडरसन डार्लिंग टेस्ट, और RJT रेयान जोआना टेस्ट, इनकी सुविधा दूसरे सॉफ्टवेयर प्रदान करते हैं. फॉर एग्जांपल मिनीटैब, बड़ा अच्छा है वो भी. मिनीटैब भी बहुत अच्छा है, एक सॉफ्टवेयर है फॉर रिसर्चर्स जो कि डेटा एनालाइज करना चाहते हैं. तो कुल मिलाकर, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, टेस्टिंग नॉर्मलिटी डिपेंड्स ऑन सैंपल साइज. सैंपल नॉर्मलिटी की टेस्टिंग निर्भर करेगी सैंपल साइज पर. तो हम सुनते आए हैं कि द कंसेप्ट ऑफ स्मॉल सैंपल एंड लार्ज सैंपल. स्मॉल सैंपल मींस लेस देन 30 कंसीडर्ड एज स्मॉल सैंपल, और 30 और उससे अधिक होंगे तो हम कहते हैं कि लार्ज सैंपल हमारे हैं. एज पर द स्टैटिस्टिकल, एक बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वानों ने जो अपनी पुस्तकों में एक दिया है. लेकिन कुछ विद्वानों ने, कुछ सांख्यिकी के विद्वानों ने इस कंसेप्ट में थोड़ा सा परिवर्तन किया है. Instead of 2 sample sizes, nowadays there are 3 sample sizes: small, moderate, large. Small, the concept of small sample is same, less than 30 considered as a small sample, 30 to 100 considered as a moderate sample, and 100 and above considered as a large sample. It means testing normality for small sample will be different, testing normality for moderate sample will be different, and testing normality for large sample will be different. तो हमें बात करनी चाहिए हाउ टू टेस्ट द नॉर्मेलिटी ऑफ स्मॉल सैंपल. स्मॉल सैंपल्स की नॉर्मेलिटी को कैसे चेक करें. एक लाइन लिख लीजिए, यू कैन राइट ए सिंगल लाइन. देयर इज नो नीड टू, यदि स्पेशली हम सर्वेक्षण अध्ययन कर रहे हैं, सर्वे स्टडीज, इफ यू आर गोइंग टू कंडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉल सैंपल, देयर इज नो नीड टू टेस्ट. ऑलवेज अज्यूम दैट डेटा इज नॉन नॉर्मल एंड डायरेक्टली अप्लाई non-parametric. It is suggested by the eminent scholars from the field of statistics, but exceptions are always there. If you are going to conduct experimental studies, yes, you can test. अब बात करते हैं टेस्टिंग नॉर्मेलिटी ऑफ मॉडरेट सैंपल साइज. हाउ मेनी मेथड्स वी हैव? 3. कौन कौन से? डिस्क्रिप्टिव में स्टैटिस्टिक्स, ग्राफिकल मेथड, फॉर्मल टेस्ट. तो सबसे पहले कौन सा लगाएंगे? तो आंसर इज फर्स्ट अप्लाई फॉर्मल टेस्ट, कि आप पहले फॉर्मल टेस्ट लगाइए. आंसर क्या होगा? फॉर्मल टेस्ट कहेगा यस और नो. यदि फॉर्मल कहता है कि यस नॉर्मलिटी है, तो 100% विश्वास फॉर्मल टेस्ट पर मत कीजिए. क्रॉस टेस्ट बाय रिमेनिंग 2 मेथड्स बाय यूजिंग डिस्क्रिप्टिव एंड ग्राफिकल मेथड. यदि वो कहता है फॉर्मल टेस्ट की नॉर्मल नहीं है, एक्सेप्ट द रिजल्ट एंड डायरेक्टली अप्लाई नॉन पैरामेट्रिक. इतनी सी बात.
टेस्टिंग नॉर्मेलिटी ऑफ लार्ज सैंपल, इसमें भी क्रम वही रहेगा, पहले फॉर्मल टेस्ट लगाइए। फॉर्मल टेस्ट कहते हैं कि नॉर्मेलिटी है, देन देयर इज नो नीड टू क्रॉस टेस्ट। इस पर 100% रिलाई कर लीजिए, क्योंकि ये टेस्ट लार्ज सैंपल को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं। अगर ये कहते हैं कि नॉन नॉर्मल है, इन दैट केस क्रॉस टेस्ट द नॉन नॉर्मेलिटी, क्योंकि लार्ज सैंपल में बहुत कम चांसेस हैं कि नॉन नॉर्मेलिटी होगी। फाइंड आउट द आउटलायर्स, फाइंड आउट द एक्सेप्शनल स्कोर, कि एक दो स्कोर ने पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का, पूरे आंकड़ों का कबाड़ा कर दिया। उस दशा में आइडेंटिफाई द आउटलायर्स, और उस आउटलायर को रिमूव कर दीजिए। दैट विल नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अनएथिकल इशू। वो दूर दूर तक कोई अनैतिक नहीं माना जाएगा, वो अनएथिकल इशू नहीं होगा। इसलिए क्रॉस टेस्ट द नॉन नॉर्मेलिटी इन केस ऑफ लार्ज सैंपल। तो ये कहानी थी। अब प्रैक्टिकली बात कर लेते हैं इसको, उसके बाद एक एक टेक्निक, जितनी भी कल के सेशन में और आज के बचे हुए सेशन में जितनी भी टेक्निक्स को हम प्रैक्टिकली कर पाए, हम करने का प्रयास करेंगे। हाँ, शुरू करते हैं, लेकिन मुझे आपका साथ साथ थोड़ा सा साथ भी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल पार्ट है। तो मैं बीच बीच में पूछूं तो कोई भी एक, आप जो भी ऑर्गेनाइजर्स हो सर, जो भी होंगे, एक मेरे उसका जवाब देते रहेंगे तो मुझे कॉन्फिडेंस रहेगा। सर कौन कोऑपरेट करेगा? आप रहेंगे सर? आई एम गोइंग टू शो, अब मैं आपको एक शो कर रहा हूं हाउ टू टेस्ट द नॉर्मेलिटी। ठीक है, वी नो दैट वी हैव टू व्यूज, हमारे पास डेटा व्यू भी है, वेरिएबल भी। सर दिखाई दे रहा है ना जो मैं इस पर कर रहा हूं? यस सर, यस सर। सर हाँ, आवाज आपकी बिल्कुल स्पष्ट है, आप एक बार बने रहिए लाइन पर। सर ये दो व्यू है, डेटा व्यू है, वेरिएबल व्यू है। और डेटा व्यू में आई एम एंटरिंग फ्यू स्कोर्स, ज्यादा नहीं, केवल हम 20 स्कोर से इसको करेंगे, यानी स्मॉल सैंपल से ही करेंगे। लेकिन सर हाउ मेनी स्कोर्स आर देयर? 20 स्कोर सर। 20 स्कोर्स। सर गो टू वेरिएबल व्यू, इसको नाम दे देते हैं सर, किसके हैं? एंग्जाइटी के। मान लीजिए ये स्कोर है एंग्जाइटी के। हम बात कर रहे हैं हाउ टू टेस्ट द नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी चेक कर रहे हैं, किसी टेक्निक को नहीं लगा रहे हैं, केवल एनालाइज कर रहे हैं इसको नॉर्मेलिटी, क्योंकि हमें डिसाइड करना है, वी हैव टू डिसाइड वेदर वी आर गोइंग टू अप्लाई पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। तो गो टू एनालाइज, सामान्य सी बात, गो टू डिस्क्रिप्टिव, go to explore, bring this anxiety in the dependent list, simple सी बात, go to plots and opt for normality plot with tests, continue, click on OK। सामान्य, ये आपके सामने आउटपुट है, सिंपल सा। सर ये बताइए, सर हमारे पास 3 मेथड थे सर, पहला था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दूसरा था क्यू प्लॉट और तीसरा था फॉर्मल टेस्ट। तो सर ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए, सी माय कर्सर। सर मेरा कर्सर कहां पर है? स्क्रीन पे है सर। सर वैल्यू कितनी है? 1.182। हाँ, -1.182। इसके मतलब कि स्टैंडर्ड एरर से भी अधिक है, 1 से अधिक, में गड़बड़ है, स्क्यूनेस गड़बड़ है, नॉन नॉर्मेलिटी। क्योटोसिस कितना है सर? क्योटोसिस ठीक है, 0.612। जी। अगला ये सर क्यू प्लॉट है, ये क्यू प्लॉट है, ये देखिए, ये अकेला स्कोर थोड़ा सा एक्सेप्शनल स्कोर सा है, ये थोड़ा ऑल द स्कोर्स, यानी आप एक्सेप्ट करने एक बहुत नजदीक है, इट्स ऑन ए बॉर्डर, नॉन एक्सेप्टेंस रेंज के बिल्कुल बॉर्डर पर है। और ये हमारे फॉर्मल टेस्ट है दोनों सर, कोल्मोगोरोव स्मिर्नो टेस्ट और शापिरो विल्क टेस्ट के रिजल्ट। मैं एक बार और नॉर्मल इसको बनाकर दिखाता हूं आपको।
थोड़ा सा और डेटा की एंट्री कर देते हैं, और जो कोई एक एक्सेप्शनल कोई स्कोर होगा, एक दो स्कोर, उसको हम डिलीट कर देते हैं। ये शायद 45 सबसे अलग लग रहा है, तो इसको 70 कर दिया। अब देखिए शायद एनालाइज अगेन, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोर, क्लिक ऑन ओके। सर नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्यूनेस? सर माइनस 9.969। इट मीन्स बोथ आर बिलो 1 लगभग। और ये आपका देखिए, ये भी नॉर्मलिटी। अब सर नॉन नॉर्मल, एक सीवियर नॉन नॉर्मलिटी करके देखते हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स को समझने में आसान रहेगा। एक सीवियर नॉन नॉर्मल, ये एक अकेले स्कोर को, ये एक्सेप्शनल है। देखते हैं कि क्या इसके रिजल्ट्स हैं। गो टू हाँ सर, एनालाइज, गो टू डिस्क्रिप्टिव, गो टू एक्सप्लोर, ओके। सर देखिए क्योटोसिस कितना है? 19 हो गया सर, 19.84। यानी 1 से बहुत अधिक है। स्क्यूनेस कितना है? 1 से अधिक है। और सर ये देखिए, ये जो क्यू प्लॉट इसके आसपास है क्या? बहुत नहीं स्कोर सर। दूर दूर है। और सर ये फॉर्मल टेस्ट भी आप देख लीजिए, हाईली सिग्निफिकेंट। तो ये सामान्य सी बात थी। इसमें कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो फिर हम एक एक टेक्निक की बात करेंगे। आज के सेशन में कोशिश करेंगे 2 टेक्निक्स की चर्चा हो जाए। Sir, most of the students are research scholars. So actually, research scholars from master degree. So यस हम एक एक टेक्निक की बात करेंगे सर, क्योंकि बहुत लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है ये चीजें सर। नहीं, समझ में नहीं आ रहा मतलब कि आज की चर्चा समझ में नहीं आई क्या? सर चर्चा समझ में आ रही है, नॉन नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी, फिर उसके बाद में फिर एसपीएसएस सॉफ्टवेयर सर उनके लिए नया है। तो अच्छा, मैनुअल कैलकुलेशन चाहते हैं आप? हाँ सर। ओके ठीक, आपको पहले बताना, अभी शुरू कर देते हैं। गुड। तो अगला प्रेजेंटेशन लेते हैं, सिंपल सा। सर सिंपल 2-3 टेक्निक लेते हैं। सर टी टेस्ट से शुरू करते हैं, सिंपल टेक्निक जो आप इनके सिलेबस में, मास्टर डिग्री के सिलेबस में भी होगा, टी टेस्ट। इज इट ओके? हाँ सर, ये हमारे टी टेस्ट की बात करते हैं। टी टेस्ट, टी परीक्षण। ध्यान दीजिए, प्रेजेंटेशन आउटलाइन क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स का ज्ञान होना चाहिए कि टी टेस्ट में से पहले में क्या क्या ज्ञान हो। उसके बाद टी टेस्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ टी टेस्ट, कितने प्रकार के टी टेस्ट हैं। चौथा, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की बात करेंगे, फिर डिपेंडेंट टी टेस्ट की बात करेंगे, वन सैंपल टी टेस्ट की बात करेंगे। अब शुरू करते हैं पहले भाग से। अगेन आई रिपीट, 6 भागों में विभाजित किया गया है। तो सिंपल सी बात है, तो बिगिनर्स के लिए, मास्टर स्टूडेंट्स का एक पहला बिगिनर है स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में। तो शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कि यूज्ड इन इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। 2 शब्द आप सुनते आए हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड व्हाट डू यू मीन बाय लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस? की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, आपसे मैं पूछूं, आपके, मान लीजिए किसी बच्चे से मैं कहूं कि आपका जन्मदिन है आज, और आपके माता जी ने आपको 5,000 रुपए दे दिए कि बेटा ये जन्मदिन के लिए आपको पैसे, और आपको मार्केट में जाना है, 5 शर्ट खरीद लानी है, और कुछ मत लाना, ये गिफ्ट है लेकिन शर्ट होने चाहिए 5। तो वो बच्चा पहली शर्ट कितने रुपए खरीदेगा? 1,000 की, और उसका साथ ही साथ गया तो बोले 1,000 की नहीं, 1,000 की, नो, 1,100 की खरीदिए। क्या खरीद सकता है? यस, ही इज फ्री। दूसरी शर्ट में भी थोड़े रेट में इधर उधर कर सकता है, लेकिन इन 5 ऑप्शंस में से 4 बार तो वो फ्री है, 4 टाइम्स ही इज फ्री। पर जो चौथा, जो 5वां ऑप्शन है, वो रिस्ट्रिक्शन है, वो तो जितने पैसे बचे उसमें लेना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स माइनस नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस।
जो कि इस एग्जाम्पल में शॉर्ट में 5 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज थी, जिसमें से फ्रीडम 4 था और रिस्ट्रिक्शन बाध्यता 1 थी, जितना पैसा बचा। जैसे कि मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी इतना ही ध्यान रखिए, हम तीनों टेस्ट में इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और वन सैंपल टी टेस्ट में क्या क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा चर्चा करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम मींस टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स माइनस नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। अब बात करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की। तो इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन वी कंडक्ट द स्टडीज एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो है क्या? It is an imaginary line that differentiate that the occurrence of event is by chance or not by chance। कि एक ऐसी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, जो घटना घटित हुई वो बाय चांस हुई या नॉट बाय चांस। एंड नॉट बाय चांस हम मान के चलते हैं 95% और बाय चांस हम मान के चलते हैं 5%। तो आवर कॉन्फिडेंस लेवल इज 95% एंड आवर सिग्निफिकेंस लेवल इज 0.05 मींस 5%। तो ये टर्म आएंगी बार बार। तो टी टेस्ट की बात करते हैं। टी टेस्ट की परिभाषा सिंपल सी है, इससे सिंपल परिभाषा नहीं मिल सकती। टी टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू सैंपल्स। टी टेस्ट एक ऐसी सांख्यिकीय तकनीक है जो दो समूहों के माध्यों के बीच सार्थक अंतर ज्ञात करती है। जो दो समूहों के माध्यों के बीच सार्थक अंतर ज्ञात करती है। इसमें दो समूहों की तुलना करने के लिए जिस सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग किया जाता है वो कहलाती है टी टेस्ट। तो अब बात करते हैं टी टाइप्स ऑफ टी टेस्ट। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टी टेस्ट। 3 प्रकार के टी टेस्ट हैं, तीनों ही आपके सिलेबस में होंगे। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, स्वतंत्र टी परीक्षण, डिपेंडेंट टी टेस्ट, आश्रित टी परीक्षण, वन सैंपल टी टेस्ट, एक न्यायदर्श टी परीक्षण। तो मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे, एग्जाम्पल के साथ, डेटा के साथ इन तीनों टी टेस्ट की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले से इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। पहले टी टेस्ट की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। हिंदी में हम कहेंगे स्वतंत्र टी परीक्षण। हिंदी में हम कहेंगे स्वतंत्र टी परीक्षण। Independent t-test is a statistical technique used to find out the significant difference between the means of two independent samples। दो स्वतंत्र समूहों के माध्यों के बीच सार्थक अंतर ज्ञात करने के लिए जिस सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग किया जाता है वो कहलाती है स्वतंत्र टी परीक्षण। इट मीन्स वी रिक्वायर 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। हमें 2 स्वतंत्र समूह चाहिए। एग्जाम्पल, इसको अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग नामों से इंडिपेंडेंट टी टेस्ट कहें या स्टूडेंट्स टी टेस्ट कहें या सिंपल टी टेस्ट कहें, बात एक ही है। दिस इंडिपेंडेंट टी टेस्ट इज नॉन बाय 3 डिफरेंट नेम्स। यह इंडिपेंडेंट टी टेस्ट 3 विभिन्न नामों से जाना जाता है। अब एक एग्जाम्पल, फॉर्मूला लिख लीजिए स्टूडेंट्स के लिए। फॉर्मूला ध्यान दीजिए, टी टेस्ट का जो आंसर निकलेगा दैट इज नोन एज ए टी रेशियो, टी अनुपात। टी रेशियो इज इक्वल टू डीएम। डीएम मीन्स डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स। डीएम मीन्स डिफरेंस बिटवीन मीन्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट SD1 square means standard deviation 1 square upon N1 means number of subjects in first group plus standard deviation 2 square upon N2। ये फॉर्मूला याद रखें, सिंपल सा फॉर्मूला है। DM difference between mean divided by means upon under root standard deviation 1 square upon N1 plus standard deviation 2 square upon N2। सर इसी रूप में करना है क्या? हाँ जी सर, हेलो। यस सर, यस सर। ये चलेगा ना? हाँ सर। हाँ ठीक। तो अब इसको एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, ये पूरा एग्जाम्पल, टाइटल हमारा है कंपैरिजन ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप है हमारे पास, एक महिलाएं हैं, पुरुष हैं। उन दोनों समूहों के एकेडमिक परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है
और एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए to measure the academic performance a class test was conducted and the marks are given out of 15 कि टीचर ने क्लास टेस्ट लिया और 15 में से मार्क्स दिए, द टीचर अवॉर्डेड मार्क्स आउट ऑफ 15 और वही उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस था। इस अध्ययन के लिए सब्जेक्ट्स की बात करें, टोटल 60 सब्जेक्ट्स वर सिलेक्टेड, टोटल 60 सब्जेक्ट थे, 30 महिलाएं थी, 30 पुरुष थे। तो इंडिपेंडेंट टेस्ट में जरूरी नहीं है कि इक्वल सैंपल साइज हो। इस एग्जाम्पल में, इस हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल में 30 महिला 30 पुरुष है। यू कैन टेक अनइक्वल सैंपल साइज ऑल्सो, आप 30 मेल 40 फीमेल कुछ भी ले सकते हैं, अनइक्वल भी ले सकते हैं, इक्वल भी ले सकते हैं, दैट विल क्रिएट नो डिफरेंस। ऑब्जेक्टिव, अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मींस अनुसंधानकर्ता का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, महिला और पुरुषों के एकेडमिक परफॉर्मेंस के बीच में अंतर ज्ञात करना, सार्थक अंतर ज्ञात करना। रिसर्चर ने एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट की कि यह परिकल्पना की जाती है कि महिला और पुरुषों के एकेडमिक परफॉर्मेंस के बीच में कोई अंतर नहीं आएगा। वो मान के चल रहा है, रिसर्चर मान के चल रहा है कि दोनों ही समूह समान है इन टर्म ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस। और स्टैटिस्टिकल टेक्निक की बात करें, टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इंडिपेंडेंट टी टेस्ट इज यूज्ड, क्योंकि जिस टेक्निक की हम बात कर रहे हैं उसी का एप्लीकेशन इसमें है, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। दोबारा देखिए, टाइटल है कंपैरिजन ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। 30 महिलाएं हैं, 30 पुरुष हैं, इन सब की एकेडमिक परफॉर्मेंस को मेजर किया गया क्लास टेस्ट के द्वारा और इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के माध्यम से इसको ज्ञात करने का प्रयास कर रहे हैं कि डिफरेंस है या नहीं है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। सी, तो ये सब के आंकड़े हैं, रो स्कोर्स हैं। ये 30 देखिए आउट ऑफ 15 स्कोर्स है, ये 30 आंकड़े हैं किसके, मेल्स के, और ये दूसरे रो में, इस कॉलम में आंकड़े हैं फीमेल्स के। इन आंकड़ों के आधार पर अब हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट निकालते हैं और हमारा था इन सब का मीन निकाला, तो मीन, मेल का मीन निकला 10.53, फीमेल का मीन निकला 10.46, स्टैंडर्ड डेविएशन निकला मेल्स का 1.65 और संयोग ऐसा है कि फीमेल्स का भी स्टैंडर्ड डेविएशन समान था। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दोनों समूहों में समान है, 30 मेल में है और 30 फीमेल्स में, सामान्य सी बात। इन सभी वैल्यूज को हम फॉर्मूला में रखते हैं, सूत्र में रखते हैं। वी विल पुट ऑल दीज वैल्यूज इन ए फॉर्मूला। टी रेशियो का फॉर्मूला क्या था, टी टेस्ट का फॉर्मूला था डीएम अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर अपॉन n2 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर अपॉन n2। डीएम डिफरेंस बिटवीन मींस, इट मींस 10.53 माइनस 10.46, 10.53 माइनस 10.46। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 क्या है, 1.65 का स्क्वायर, तो 1.65 स्क्वायर अपॉन n1 मींस नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन फर्स्ट ग्रुप मींस 30 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 भी समान है इस एग्जांपल में 1.65 का स्क्वायर और अपॉन 30 और आंसर विल बी दिस 0.156। तो हाउ वी विल इंटरप्रेट द रिजल्ट्स, हम इन रिजल्ट्स का इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, रिजल्ट्स का इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे। तो ये हमारा है कैलकुलेटेड टी वैल्यू कहें या कैलकुलेटेड टी रेशियो कहें, इस फॉर्मूला के द्वारा हमने किया था। हमारा उद्देश्य है कि महिला और पुरुषों के एकेडमिक परफॉर्मेंस के बीच में सार्थक अंतर ज्ञात करना, ये हमारा पर्पस है। तो हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 0.156 है और टेबुलेटेड वैल्यू है, डिग्री फ्रीडम क्या होगा n-2, तो टोटल सब्जेक्ट्स कितने 60 माइनस 2 डिग्री फ्रीडम क्या होगा 58, क्योंकि वी हैव रिस्ट्रिक्शंस इन वन कॉलम एज वेल एज वी हैव रिस्ट्रिक्शंस इन सेकंड कॉलम। तो ये जो कहानी हम कर रहे थे, तो इसमें वी हैव कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ 0.156 and we have the tabulated value of 2. Ladies and gentlemen, if the calculated value is greater than the tabulated value, significant difference is there. If the calculated value is lower than the tabulated value, no significant difference is there. In this hypothetical example, the calculated value is this 0.156 and the tabulated value is 2. Since the calculated value is lower than the 2,
there is no significant difference. It means males and females both possesses the same level of academic performance. यानी महिला और पुरुषों दोनों की बौद्धिक क्षमता के बीच कोई सार्थक अंतर ज्ञात नहीं है। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू तो हमने फॉर्मूला से निकाल ली, लेकिन टेबुलेटेड वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए टेबल है, देखिए टी टेबल है, ये टी टेबल है। 58 पर मीन्स वी कंडक्ट आवर स्टडीज एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, गो टू 58 डिग्री ऑफ फ्रीडम, the value here is only 2, so we selected this value. So conclusion हमारा रहेगा इस hypothetical example में, इस परिकल्पना पूर्ण उदाहरण में हमारा है कि क्योंकि calculated value कम है tabulated value से, इसलिए there is no significant difference between the academic performance of males and females. Both males and females, दोनों ही पुरुष और महिला दोनों ही समान लेवल का एंजाइटी धारण करती है। सर अभी तक हमने 3 टी टेस्ट में से एक की बात की। इस टी टेस्ट से कोई यदि कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछिए, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। सर इसी प्रकार से आप चाहते हैं या कोई दूसरा तरीका चाहते हैं? सर यही बेस्ट है सर, यही बेस्ट है। तो जितनी भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हो पाएंगी 2, 4, 5 कल भी मैं रहूंगा। अभी वी हैव लगभग हमारे पास वी हैव 14-15 मिनट्स। आप कहें तो एक टेक्निक को की चर्चा आगे बढ़ाएं, यदि आपके दैट डिपेंड्स ऑन यू, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजर्स कि आप क्वेश्चन आंसर सेशन रखना चाहते हैं या इस टेक्निक को कंटिन्यू करना चाहते हैं। Hello. हाँ जी Morning, मैडम। sir. जी Sir, one question is there. जी Sir, हम फिजिकल एजुकेशन फील्ड में 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल क्यों लेके चलते हैं? मतलब बड़ा 0.01 पे तो ले सकते हैं, तो हाँ 0.05 ही। ये बहुत ही एक अच्छा और एक संवेदनशील क्वेश्चन है कि व्हाई वी टेक 0.05। देयर इज नो साइंटिफिक लॉजिक बिहाइंड दिस। इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक है ही नहीं। बब्बर शेर बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वान फिक्स कर गए। तो ये भी तो एक आपका एक क्वेश्चन इसके अंदर मैं ऐड करना चाहूंगा कि एक तरफ तो हम 99% कॉन्फिडेंस लेवल पर करते हैं, मींस 0.01 लेवल पर, एक तरफ हम करते हैं 95 पर। तो क्या हम 98, 97, 96% एक्यूरेट नहीं हो सकते क्या? कि या तो हम 99% पर लेवल पर करेंगे या 95 पर। तो देयर इज नो साइंटिफिक लॉजिक सिंस आवर सीनियर्स प्रगाढ़ विद्वान विदुषी फिक्स करके वी आर फॉलोइंग दिस। इज इट ओके? Is it okay? Yes, sir. Thank you, sir. अच्छी बात है, आप क्वेश्चन पूछिए आप। सर देयर इज वन मोर क्वेश्चन। जी जी यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर जब हम जैसे हम लोग प्रोफेशन, हम लोग का फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशन में हम लोग काम करते हैं, तो जो 0.05 एरर रेट है, तो 0.05 एरर रेट इसलिए है कि हम लोग फील्ड पर वर्क कर रहे हैं, इसीलिए है? नहीं, इसलिए नहीं कह सकते। सिंस वी आर कंडक्टिंग द स्टडी, वी आर अनेबल टू कंडक्ट द स्टडीज इन कंट्रोल्ड कंडीशंस। लेकिन हमारा क्षेत्र तो ऐसा है कि वी कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल स्टडीज आल्सो एंड वी कंडक्ट सर्वे स्टडीज आल्सो। तो ये तो है कि सर्वे स्टडीज कैन नॉट बी कंडक्टेड अंडर एक गुड कंट्रोल्ड कंडीशंस, बट एक्सपेरिमेंटल स्टडीज कैन बी कंडक्टेड इन कंट्रोल्ड कंडीशंस। तो यदि कंट्रोल्ड कंडीशंस में साइंटिफिक स्टडीज हैं, yes we do not take at 90.01 level of significance, but this should be, we should conduct at 0.01 if we are conducting the studies by taking different designs, suitable design, double blind experiments, single blind experiments, by taking pre-test post-test control group design also, by using Solomon 4 group design also, and if we conduct the lab studies, is it okay? हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए वो 0.05 तक जा सकता है। जी जी
ओके सर। लेकिन हम कंट्रोल्ड कंडीशन में भी तो करते हैं। सर हमारा क्षेत्र कोई अकेला सोशल साइंस रिलेटेड नहीं है। इन आवर फील्ड वी कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल स्टडीज टू। कंट्रोल कंडीशन तो वहां पर होगा, जैसे कोई भी साइंस स्टूडेंट है जब लैब में काम कर रहे हैं तो उनका एरर रेट जो आने का संभावना है उनका कम होता है, तो वहां क्योंकि कंट्रोल है इसीलिए। कंट्रोल सर, आप हम भी तो लैब में स्टडी, आपके यहाँ भी तो दुनिया भर की लैब्स हैं। साइंटिफिक साई की सेंटर्स की बात करें, दे आर कंडक्टिंग साइंटिफिक स्टडीज इन द लैब्स। यदि एनएस पटियाला की लैब्स देखें, दूसरी लैब्स देखें, तो दे कंडक्ट इन द सिमिलर मैनर, दे आल्सो कंडक्ट इन अ सिमिलर मैनर। ओके, थैंक यू सर। So we have more 10 minutes. So if you want to continue. अच्छा, टेक्निक की बात। हाँ सर, टेक्निक्स। तो एक तो टेक्निक पूरा होना मुश्किल है, कोशिश करते हैं। पार्डन सर। It will be very difficult to complete the technique in 9-10 minutes. Okay sir, I'll ask the audience if there is any questions. ये पार्टिसिपेंट्स किस ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है या फॉर द मास्टर स्टूडेंट्स? सर दीज आर फॉर रिसर्च स्कॉलर्स एंड फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है, तो जितने भी फैकल्टीज है दे आर जॉइंड अस इन लाइव, सो वो हमारे साथ में लाइव में जुड़े हैं एज दे आल्सो हैव देयर एकेडमिक ड्यूटीज। और ये सारे जो है सर ये मास्टर स्टूडेंट्स है, पीजी स्टूडेंट्स है सारे, एंड उनका अभी डेजर्टेशन का चल रहा है, तो फिर डेजर्टेशन दे आर इन द प्रोसेस ऑफ डेजर्टेशन नाउ। तो I will try to cover 4-5 techniques, or it will be better if you send me the name of techniques which are in their syllabus. उनके जो सिलेबस में जो टेक्निक्स है उनके नाम लिखकर आप मुझे कल भेज देंगे, तो आई विल कवर दीज टेक्निक्स। मैं उन्हीं टेक्निक्स को कवर करूंगा कल, जिनके चाहे वो पीएचडी कोर्स वर्क की बात हो या मास्टर्स डिग्री की बात हो, वो कवर करने का प्रयास करेंगे। श्योर सर, श्योर सर। विद्यार्थियों को पूछना चाहिए क्वेश्चन। हेलो सर, सर वन मोर क्वेश्चन सर। सर मुझे केस स्टडी पर बहुत काफी इंटरेस्ट है सर, तो यदि मुझे केस स्टडी करना है तो किस किस बात पर ध्यान देना है, और जैसे यदि आगे फ्यूचर में यदि मैं पीएचडी करता हूँ तो ऐसा माना जाता है क्या केस स्टडी जो होता है वो 3 साल से ज्यादा आपका समय चला जाता है उसमें स्टडी करने में, तो आपका क्या सजेशन होगा सर अबाउट रिगार्डिंग केस स्टडी सर? पहली बात तो ये है कि ये पता नहीं कहाँ से ये कंसेप्ट आया कि केस स्टडी करेंगे तो 3 साल से अधिक समय। केस स्टडी तो और जल्दी हो सकती है, यू कैन फिनिश योर वर्क इन सिंगल ईयर ऑल्सो, पहली बात। दूसरी बात क्या है, केस स्टडी में क्या है, होल द स्टडी सेंटर्ड अराउंड ए केस एंड इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। Essential is, in case of the case study, the case should be alive. केस जो शब्द है वो इसके लिए, द केस शुड बी अलाइव। और इन बिटवीन यदि मान लिया आपने किसी व्यक्ति विशेष पर वो केस स्टडी ले ली और बीच में वो केस लुप्त हो गया, एक कुछ ऐसा अनहोनी घटना ना हो, मान लीजिए डेथ हो गई, तो it will not be possible us to complete the case study. In that case, you have to convert your case study in between from case study to historical research. So for case study, so it is advised by the eminent scholars that you should collect the data by using only primary sources. Primary sources means directly you may contact the particular case also, and you may collect the data from any unit that is closely associated with your case. Is it okay? और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 3 साल क्यों लगेंगे, क्या उसके पीछे लॉजिक है? आप कह रहे 3 साल लगने का कारण क्या है? ऐसा क्या काम करेंगे आप जिससे 3 साल से अधिक लगेगा?
आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो हाँ जी जी, बताइए, आवाज आ रही है। सर, इफ आई हैव टू स्टडी डीपली अबाउट द इंडियन ओलंपिक्स परफॉर्मेंस, व्हाई हमारा कंट्री जो है वो सुपर पावर नहीं है और अदर हम्म, कंट्री जो है वो सुपर पावर है ओलंपिक में। तो यदि मैं हम्म। ये रिसर्च करता हूँ, इस चीज को डीपली मैं स्टडी करता हूँ, तो तो यदि आप नहीं बोल नहीं, प्लीज वेट, व्हाट विल बी योर केस? This will be a mixed type of study, that this is mixed study, case study. What will be your case? Case should be a social unit. तो इसमें केस क्या है आपका? आप सर समझने का किसी प्रयास कीजिए मेरी बात को। समझ रहे हैं ना? मेरी बात समझ रहे हैं कि यह प्योरली केस स्टडी नहीं होगी, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मिक्स्ड टाइप ऑफ स्टडी। इज इट ओके? तो ये सर्वे, इसमें सर्वे भी आएगा सर, सर्वे स्टडी यस। भी होगा? ये इसमें केस की जगह सर्वेक्षण अधिक है। ओके सर। आप मेरी बात से मतलब एग्री हैं या नहीं है? यस सर, यस सर, यस सर, आई एम गेटिंग पॉइंट्स। तो हाँ। मतलब ये सर्वे स्टडी, मतलब ये सर्वे स्टडी में आएगा ये सारी चीजें? यस यस। और कोई क्वेश्चन? Yes, any more questions? Any questions from your side? No? Okay, thank you. Thank you very much, sir. थैंक यू Thank मैडम, you very थैंक much, यू। sir, for sharing आप your सभी को thoughts and बधाई। knowledge with us and delivering such a wonderful lecture. Our students will benefit a lot from this session. Definitely, क्योंकि the way you presented your maximum things like research as a layman language. नॉर्मली सभी बच्चे हम लोग साइंटिफिक वर्ड टर्मिनोलॉजीज और बुक से जो पढ़ते हैं, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो इजीली सबके लिए इजी नहीं होता है कॉन्सेप्ट क्लियर होना, बट इन सिंगल लाइन जो मैक्सिमम टर्मिनोलॉजीज था लाइक टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स विद एग्जांपल, विद लाइव एग्जांपल, जो कि एक क्लास को समझने के लिए बहुत इजी वे है। इस वे से आप हमें हमारे सभी बच्चों को आप बहुत अच्छे से जो आपने एक्सप्लेन किया और जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया फ्रॉम डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। आई थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। मैडम एक बात कहना चाहूंगा, एक बात बस। जी मैडम, वी आर फेसिंग दिस कोविड-19 पेंडेमिक। इस विश्वव्यापी महामारी का सामना कर रहे हैं, और पिछले 2-1 साल में मैं ऑनलाइन लेक्चर, वैसे तो याद नहीं, लेकिन 500 से अधिक लेक्चर्स मेरे, आई डिलीवर्ड मोर देन 500-600 लेक्चर्स। लेकिन फर्स्ट टाइम मैं एक डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन को बधाई देना चाहूंगा कि वेल ऑर्गेनाइज्ड, सामने बच्चे बैठे हैं, स्क्रीन है, आवाज भी साफ है, एक हाई टेक एक लेक्चर, बहुत अच्छी बात है कि आई डिलीवर्ड लेक्चर्स इन द टॉप इंस्टीट्यूट्स आल्सो। लेकिन अच्छा लगा आज मुझे कि डीसीपी डिग्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑर्गेनाइज्ड इन ए प्रॉपर वे। थैंक यू वेरी मच, आप सबको बधाई, थैंक यू। इस इवेंट के पीछे हमारे सभी स्टाफ मेंबर्स का काफी एफर्ट्स है। फ्रॉम लास्ट वीक वी ऑल आर ट्राइंग टू गिव आवर बेस्ट। इसमें स्पेशली आवर प्रिंसिपल, आवर सेक्रेटरी श्री पद्मश्री श्री प्रभाकर राव वैद्य, सेक्रेटरी माधुरी चेनके मैम, प्रिंसिपल प्रोफेसर के देवनाथ सर, एचओडी डॉक्टर उपाध्याय सर, कन्वीनर ऑफ इवेंट डॉक्टर खंडागले सर, टेक्निकल सपोर्ट, और स्पेशली जिससे कारण से आपको ये फील हुआ कि ये बहुत बहुत अच्छा इवेंट है, आर स्टूडेंट्स, जिसके कारण से ये इवेंट सक्सेस हुआ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर।
प्रोग्राम खत्म होने के बाद, ताकि हम राज्य सरकार और राज्य केंद्र सरकार तक पहुंचा सके कि जिसके अंदर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स को केजी से लेके पीजी तक हम एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। और नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर फिटनेस और वेलनेस और फिजिकल एजुकेशन की नींव रखी गई है। मैं देवनाथ जी मेरे गुरु जी के हाउस में था, तो देवनाथ जी आपको स्पेशल प्रणाम और वंदन करता हूँ। और आने वाले दिनों में अगर मौका मिला और आप लोगों ने कुछ आयोजन किया तो हम लोग रूबरू भी मिलेंगे, और आने वाले महीनों के अंदर हम स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और क्रीड़ा भारती के माध्यम से हमारे प्रसाद महानकर जी और अनिल करवंदे सर के मार्गदर्शन में एक नेशनल सेमिनार कि हमारा मॉडर्न इकोसिस्टम क्या है और हमारा एंशिएंट इकोसिस्टम भारतीय ज्ञान प्रणाली में क्या था। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स का जो पूरा इकोसिस्टम है उसके लिए हमने पेपर्स भी इनवाइट किए। आप सभी को निमंत्रण भेजा जाएगा। आप सभी को मैं आज ही निमंत्रित करता हूं कि आप लोग भी रूबरू आइए गांधीनगर, हमारे मेहमान बनिए और स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के छात्रों को भी अपने ज्ञान का आप हिस्सा बनाइए। एचवीपीएम ने हमें सिखाया है कि अनुशासन से जिंदगी कैसे जी जाती है। मैं ताऊ जी और सभी गुरुजनों का इसके लिए आभारी हूं। हमारे परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक उनके स्वप्न समान 2011 के अंदर एक उन्होंने ड्रीम प्रोजेक्ट रखा था कि जिसमें स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गुजरात के अंदर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो और गुजरात के तमाम छात्र, भारत भर के तमाम छात्र स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बनाए, स्पोर्ट्स में डिग्री ले और नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक अपने स्पोर्ट्स कैरियर को आगे बढ़ाए। उसी नींव को आगे चलाते हुए 2 साल पहले हमारी जिम्मेवारी एज ए वाइस चांसलर दी गई, जो हम सभी को पूरे गुजरात में और पूरे भारतवर्ष के हमारे क्रीड़ा भारती के माध्यम से, हमारे सेवा भारती के कार्यकर्ताओं को भी साथ में जोड़ते हुए, हमारे एकल विद्यालयों को भी साथ में जोड़ते हुए हम लोग ग्रास रूट लेवल से टॉप लेवल तक कैसे पहुंचा जाए, उसके लिए मैं और मेरी स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पूरी टीम कार्यरत है और कटिबद्ध है कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों के अंदर हम प्रधानमंत्री जी का सपना जरूर पूरा करेंगे कि फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स का कोई भी आदमी फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स का फील्ड हमारा विश्व गुरु बनने के लिए नींव के अंदर एक पत्थर की भूमिका में रहेगा। मैं भी एक पत्थर के समान उस नींव की भूमिका का एचयूपीएम का छात्र हूं, जिसका मुझे गर्व है। आप सभी छात्रों को भी मैं विनती करता हूं कि आप भले आपका 3 साल का या 1 साल का प्रोग्राम एचयूपीएम में चले, मगर एक एक गुरुजन को एक एक सेकंड, एक एक मिनट के लिए आप अकेले मत छोड़ना। कोई भी क्वेश्चन से आप उनको पूछना, आपके जिंदगी के सवाल भी आपको एचयूपीएम से ही मिलेंगे, क्योंकि जिसका मैं साक्षी हूं। एचयूपीएम कैसे हमें हमारे बच्चों को चारित्रवान, गुणवान, बलवान और उनको संवेदनशील और उनको राष्ट्र समर्पित कैसे बनाना है वो सिखाता है, जो हमारे आजादी के पहले भी एचयूपीएम ने इतना काम किया है, आजादी के बाद की भी हम सभी प्रोडक्ट है। तो हमें इसी प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना है। पूरे भारत के अंदर जितने भी फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के कोई भी आप स्कूल देख लो, कॉलेज देख लो, यूनिवर्सिटीज देख लो, स्पोर्ट्स डायरेक्टर्स देख लो, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के कोऑर्डिनेटर्स एंड फैसिलिटेटर्स आप देख लो, अच्छे से अच्छे खिलाड़ी देख लो, उसमें आपको एचयूपीएम के छात्र ही मिलेंगे। तो एचयूपीएम इतना बड़ा फाउंडेशन, इतना बड़ा नींव हमारे सामने रखा है। और आज फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर मैं आप सभी फैकल्टीज को, जितने भी पार्टिसिपेंट है सभी को आज स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए भी निमंत्रित करता हूं कि आने वाले समय में आपको रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी और भारतीय शिक्षा ज्ञान प्रणाली और आपको जो भी जरूरत है तो हम लोग आदान प्रदान करेंगे, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान को हमारे पास रखने से बढ़ेगा नहीं। और हमें जितना भी अचीवमेंट हमने किया है, हमें कोई भी लेवल मिले, चाहे ग्रास रूट लेवल भी मिले या हमें टॉप लेवल भी मिले, हमें तो कोई भी लेवल पे एक निष्ठा से, एक संकल्प से काम करना है और हमारे छात्रों को और बलवान और मजबूत बनाना है। हमें अपने अपने राज्यों को फिट रखना है। फिट इंडिया मूवमेंट कौन चलाएगा?
मोदी जी का स्वप्न 2019 का फिट इंडिया मूवमेंट की संकल्पना वो कौन चलाएगा? वो कोई ड्राइंग टीचर या म्यूजिक टीचर नहीं चलाएंगे। हमारे फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के जितने भी टीचर्स है, शिक्षकगण है, मैं भी उसमें शामिल हूँ, वही चलाएंगे। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए फिट इंडिया मूवमेंट को आप अपने यूनिवर्सिटीज, अपने कॉलेज में, थोड़े महीने पहले मैं नागपुर आया था, नागपुर यूनिवर्सिटी के साथ भी हम लोग एक एमओयू करने जा रहे हैं जिसके अंदर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी होगा और नागपुर यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें फिट इंडिया यूथ क्लब की स्थापना की जाएगी ताकि हमारे एक एक कॉलेज से युवा आगे आए और फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर फिजिकली फिट कैसे रहना है, कैसे आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है, योगा प्राणायाम का और हमारे सनातन भारत की संस्कृति का दर्शन कराते हुए हमें कैसे सात्विक आहार लेना है, न्यूट्रिएंट डाइट कैसे लेना है, हमें अपने आप को कैसे फिट रखना है, हमारे पूरे परिवार को कैसे फिट रखना है और हमारे राज्य और राष्ट्र को कैसे फिट रखना है, मजबूत बनाना है ताकि आने वाले दिनों में हम एक नया भारत का निर्माण कर सके। प्रधानमंत्री जी का सपना एक अखंड भारत का, आपने भी इतिहास पढ़ा है, सबने इतिहास पढ़ा है, भारत माता के कुछ टुकड़े हुए थे। तो हमारे फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के दायरे में रह के हमें एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है और हमारे स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन के दायरे को हमें और एक्सपांड करते हुए इन्हीं बिखरे हुए टुकड़ों को फिर से मिलाना है, एक अखंड भारत, एक नया भारत का निर्माण करना है। इसी के साथ एचयूपीएम की पूरी टीम को, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को और स्पेशली हमारे मेरे गुरुजी अनिल करवंदे सर और हमारे ताऊ जी को प्रणाम करते हुए, माधुरी मैडम को, आप सबको, देवनाथ सर को नतमस्तक वंदन करते हुए, देशमुख सर को फिर से मेरी पुरानी यादें आज ताजा हो गई जब हमने आपका एचवीपीएम का हमारा हॉल देखा। हमें भी इच्छा हो गई कि हम भी आके आज जहाँ विद्यार्थी बैठे वहां बैठे और ताऊ जी और प्रभाकर सर और देश पांडे सर, हमारे देवनाथ सर हमारे सामने लेक्चर्स ले और उनसे हम एक नया ज्ञान प्राप्त करें। इसी में बात को खत्म करते हुए, सभी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम को आज खुला करते हुए मैं सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा, धन्यवाद देता हूँ। एचवीपीएम का मैं हमेशा ऋणी रहूंगा, आभारी रहूंगा कि आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ पे बोलने के लिए और आप सबसे ऑनलाइन रूबरू होने के लिए। मेरी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को जय जय गरवी गुजरात, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस ओजस्वी भाषण ने हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया है। एक व्यक्तित्व जो मेरे व्यवसाय से उठकर एक शिक्षा की सबसे ऊंची ऊंचाइयों पर बैठकर जब इस प्रकार के शब्दों को बोलता है तो वास्तव में हमें बड़ा गर्व होता है। आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आज के हमारे प्रेसिडेंट ऑफ दिस फंक्शन डॉक्टर के देवनाथ सर, you all may be knowing Dr. K Devnath sir, very energetic, dynamic personality of our college, our principal. He's a very good academician, a sportsman, and still at this age, he compete in lot of veteran events, and because of his participation, various time he brought glory to our institution, nation, and become example to lot of our physical education teachers and students. He has done PhD, conferred DLIT also because of his contribution in physical education. He project lot of scientific paper in India, even got invitation to go abroad and present the scientific paper. Fortunately, he's a president of our this function. I request Dr. K Devnath sir to give presidential speech. Dr. K Devnath sir.
Thank you so much, Dr. Upadhyay ji, for giving me a chance of speaking to the whole fraternity. Thank you once again. Very, very pleasant morning, everyone. आप सभी का हार्दिक स्वागत है. Honorable Padmashri Prabhakar Rauji Vaidya Sahab, General Secretary of this mother institution, His Excellency Honorable Vice Chancellor, Surname Gujarat Sports University, Gujarat, and all other honorable members and the entire fraternity. I, on behalf of the Degree College of Physical Education, Multi-Faculty Autonomous College of Sri Hanuman Vyam Prasarak Mandal, Amravati, and on my personal behalf, I take this privilege once again to most sincerely welcome all of you at this juncture. Friends, the enshrined speech of the Honorable Speaker, which is going to take place, following by the rest of the speakers, I personally feel to express myself on this enlightened speech through his keynote address. The enshrined speech of the keynote address, he has given examples of the significance of faculty development program and how to stay on cutting edge to meet out the quality education and academic excellence for higher education institutions. Thank you so much, His Excellency Vice Chancellor, Honorable Arjun Singh Ji Rana, who has been a part of this occasion, and Dexter's delegation of yours. Now, I request entire fraternity to bear out with me of my introspection in a note form, in a line to be read out at this moment. Our country has been putting a lot of efforts to improve the quality and relevance of our higher education system. Government is framing policies to make it more relevant to the global needs and to remove the inequalities in access to education amongst various social groups. The quality of higher education definitely depends a lot on the quality of its teachers. Teacher is still a major source of knowledge
and development for the students. Thus, there is a greater emphasis on teachers at current times for the improvement of the quality of teaching and learning. Faculty development programs for teachers, which is seen as a method of train the trainer, holds utmost importance in the systems of higher education as well as for the prosperity of the individual institutes today. It is observed that the faculty ought to have a positive attitude towards attending and applying the skills to percolate down to the students and the institution. The enthusiasm and the emphasis on research as a skill by the faculty is deficient. The enthusiasm and the emphasis on research, innovation, and training as skill-oriented and academic excellence by the faculty are at this moment a higher inclination towards the seeing effective teaching as the single most important skill or facet of teacher's role, like student mentoring, for instance, are not perceived to be as important. This depicts that the faculty may have a lopsided view of what they are expected to do as a part of their role. Need is being felt to better acquaint the teachers with all facets of their job. Based on my 36 years of services as a teacher in this institution, I bring about a few suggestive, or you may call it suggestions, recommendations, as I'm reading about it. Are informal exchanges with more experienced colleagues able to address the professional orientation needs of newly recruited faculty? In general, the role of formal mentoring programs have been noted to be important for familiarizing and integrating new staff members into an institution. One way carrying out for the newly appointed teaching staff members, the college could be to conduct an orientation program every year. This orientation program could be separately designed for full-time faculty members and part-time faculty members, keeping in mind their specific needs and goals. The content of these programs could focus broadly on teaching methods, designing course syllabus, conducting discussions, lecturing skillfully, constructing tests, lesson planning, and organization, cognitive styles of learning of students, evaluating one's own teaching, identifying resources for research, funding, providing information to the newcomers about support services for faculty and students that are offered by the college. The duration of this program could vary. For part-time faculty, a quick orientation on interesting teaching styles and information about support services provided by the college to students and faculty would probably suffice. What can an institution expect in the way of benefits and costs if it decides to sponsor a substantial orientation program for new faculty members? Value for individual faculty member. They learn how to approach the basic professional responsibilities as a faculty member more systematically and with a better information base. The faculty members established lasting contacts
with other faculty members around campus. Newcomers can quickly get a sense of the real values of the institution, what new directions the college is heading in, and what the relative priorities are. Next is value for the institution. These programs shorten the learning time needed for newcomers to become fully functioning members of the organization. These programs seems to increase the ability of the faculty members to identify with their institution. I personally feel the potential professional competence of the faculty, considering that time is of great organizing faculty development programs, can keep it on campus for not more than 2 hours daily rather than keeping it half day full day programs and no more than once or twice a year. Having an institutional level policy to create time slots, time to have intra and interdepartment interactions, sharing of recent research and current trends. It, if such a time slot created and utilized in the right spirit, it would enhance the quality of work carried out, considering mixed response about whether it is beneficial to have formal methods to informal, some saying it get reported and some saying it is not required. One thing that is clear is that there is no clear recognition of teachers putting in such efforts. I again feel that innovative ideas is recognized publicly can motivate teachers for being open to learning of newer methods of curriculum transaction. The credit system is introduced to our multi-faculty autonomous college since conferred upon. College has been grappling with burden of more number of examinations, hence double the evaluation. On the other hand, the system results in less time to deliver subject content to the students. With this increased pressure to deliver more, somewhat to deliver more in less time, certain skills are necessary to adapt to the new scenario. I recommend that having some workshops on designing assignments, time management, and stress management can benefit. Also, if the university or the institution consider changing the workload pattern and the evaluation system by using online formats of conducting examinations, and if the college improves the infrastructure requirements for the same, time can be made available for teaching learning. Thank you so much, everyone, once again. Before I leave this platform, I would like to mention into the context as Dr. Arjunji Singh Rana said it very well. I tell you one thing, he was very curious student. He was one of the bosom students in my group, in my institution. And he has been the first leader of my group, and he has discharged his duties and the responsibilities as it was assigned. So मैं हम सभी का तरफ से मैं इनको फिर से एक बार बधाई देता हूं क्या आज या status he has achieved has conferred upon the privileged and honored upon is really a matter of pride. Thank you very much, Mr. Arjunji Rana. Thank you once again, everyone, all of you. Thank you very much. Thank you, Dr. Devnath sir. Recently, Vice Principal, Degree College of Physical Education, Dr. S.P. Deshpande sir, have joined us. I request Dr. S.P. Deshpande sir
So please come on the dais. I request डॉक्टर वी पांडे सर, मैं पांडे सर से अनुरोध करता हूं कि सर का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। थैंक यू पांडे सर। With your permission, I would also like to offer a bouquet on my behalf to Dr. S. Deshpande, who is a man of principle and man of key persons and initiatives. We all can find him in every success. This house sometimes we consider backbone of our institution. Whenever it's a question of hard work or question of achieving something, we can find him always there. And really, it's our privilege that is of our such a great pioneering institution of physical education and multi faculty. Thank you, sir. Now I request convener of this faculty development, national level faculty development program, Dr. L.M. Khandagade sir, to render vote of thanks. Dr. L.M. Khandagade sir. Thank you, sir. It's my proud privilege to share the responsibility of rendering vote of thanks to all dignitaries of inaugural functions. Honorable Padam Shri P. A. Vaidya, General Secretary, Shri Hanuman Vyam Prasarak Mandal Amravati, and respected Dr. S. S. Deshpande, Director of Shri HVP Mandals Amravati. Today, inaugurator, Honorable Dr. Arjun Singh Rana, Vice research. He will be the best teacher. उसके ऊपर से मुझे ये फ्रेज याद आई, उसके सामने मैं आपका रखा। यदि अच्छा टीचर बनना है तो रिसर्चर बनो। रिसर्चर क्यों बनना है? बिकॉज रिसर्च एक्सप्लोर द नॉलेज। पुरानी चीज सब कचरा पड़ी है, कल का किताब आज काम का नहीं है। जो नोट्स पढ़ते थे, अभी ग्लोबलाइजेशन हो गया, सब ऑनलाइन है। ये सब मेरा प्रेजेंटेशन ऑनलाइन है, मेरे 47 वीडियोस अपलोडेड है स्वयं और मुख के ऊपर, और वो पुराने हो गए, मैं उसको देखता नहीं। आज का मेरा स्पीच होने के बाद ये भी पुराना हो जाएगा। एवरी डे वी आर गेटिंग द न्यू मीन्स, मैंने लिखा है पर्पस ऑफ रिसर्च इज टू फाइंड आउट द ट्रूथ व्हिच इज हिडन and which has not been discovered yet. Every day we have to discover, we have to find where is the hidden knowledge, क्योंकि बहुत नॉलेज है और वो नॉलेज उसके ऊपर ही अपना डेवलपमेंट है। अपन जापान का नाम क्यों लेते हैं, अमेरिका का नाम क्यों लेते हैं? डेवलप कंट्री बोलते हैं, और अपने को खुद को अपन क्या बोलते हैं? वी आर डेवलपिंग कंट्री। तब तक डेवलपिंग रहेंगे अपन डेवलप नहीं हो सकते क्या? अपन जर्मन जैसा नहीं बना सकते, यूरोप खंड के जैसे नहीं, रशिया जैसा बन नहीं सकते क्या? बन सकते हैं, बट लेकिन अपनी मेंटेलिटी ऐसी हो गई कि अपन वी आर डेवलपिंग। आई डोंट बिलीव वी आर डेवलप, वी कैन डू।
Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. I am audible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. My class will start at 1. Na? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then I have to share my this thing PPT Yes, through sir. this share. Yes, sir. Okay. My video and audio both are working. Na? Yes, sir. Yes, sir. It is. Okay. Is it clearly visible? Shall I test one thing whether by sharing a slide? Sure, sir. Sure, sir. टाइम ले रहा है बहुत. कैसे क्लिक करके इसे एंटायर स्क्रीन को क्लिक करना है. बाद में शेयर कर. हाँ सर. आ गया. हाँ सर. अभी आ गया है. It is visible now. इसको now it is clearly visible to everyone. I think so. Yes, sir. So at what time shall I start? Sir, 1 o'clock. Our staff members they will introduce you and correct 1 5. So your voice is not clear. Sir, at 1 o'clock, our staff member she will introduce you, and after Okay. that, at 1:05, you start the session, sir. Okay. Okay. So still 7 minutes are there. So I should remain or I should get out of this. Sir, please be remain, sir. Okay. Okay. So that there should not. By that time I'll just check me. Okay, it's Yeah, working. sure. It's working. My screen is visible, na? Yes, sir, it is visible, sir. Okay. Yes, it is the first time I am using this app, StreamYard. Yes, sir. It's new one. Uh, Then he will, sir.
Good afternoon, everyone. Once again, welcome you all in second session of FDP program. Now, we have with us Dr. Tapan Datta sir. Presently, he is working as a professor and officiating principal NSM Nagpur. Recipient of late Principal H.V. Barbute Memorial Silver Medal for professional contribution in the field of physical education and sports by the Academy of Physical Education, RTM, Nagpur University, Nagpur. Under his guidance, 24 research scholars have been awarded PhD in physical education by RTM, Nagpur University. He is acted as a resource person in many international, national, and state level seminar, workshop, and conferences. He has published 8 books related to physical education and sports have been published. His 30 research articles published in state, national, and international level journals and periodicals. With these words, I would like to request Dr. Tapan Datta sir to present a lecture on research report writing. To please commence the lecture, sir. Sir, please. Good afternoon, everyone. I am audible. Am I audible to everyone? Okay. Okay. Good afternoon, everyone. It's an honor to be here with you all for this FDA program, which has been organized by Degree College of Physical Education, HVPM, Amravati. And at the outset, I must thank Dr. Kamal Kanti Devnath sir, who is the principal of the institute, and the organizers for giving this me an opportunity to share my views. Actually, I have been given 2 topics to share with you. Number one is writing a research proposal, which I'll take in today, and tomorrow they have given me an assignment to deliver a lecture on writing a research report. So there is a very at the outset I will say writing a research proposal is most important, and it should be taken very due consideration while writing a research proposal, because on the basis of research proposal only research report is being written. So let us talk about what actually research proposal mean. When we talk about research proposal, it is this research proposal is a document that provide detailed description of the intent research project. Matlab, it gives the entire detail. What are you going to conduct, how you are going to conduct, why you are going to conduct, what you are going to conduct. Everything is there in this research proposal, and on the basis of this proposal you will get an outline of the entire research proposal that renders the knowledge to the reader about the summary and information that you have discussed in that you are going to conduct in your research project. आमतौर से अगर हम देखें, will it be easy for you to if I talk in English and Hindi both? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, सो आमतौर से अगर हम देखें तो जब हम रिसर्च प्रपोजल, जिसे हम सिनॉप्सिस के नाम से जानते हैं, वो लिखते हैं तो बहुत केयरफुली इसको लिखना चाहिए, इसको प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर ही लोगों जो रिसर्च स्कॉलर है वो अपना रिसर्च कंडक्ट करते हैं. सो व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव why we write a research proposal? The objective in writing a research proposal is to describe what you will do. सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो रिसर्च स्कॉलर जो है वो रिसर्च जो करने जा रहा है कोई भी एक रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर या टॉपिक के ऊपर, वो क्या करने वाला है उसमें, व्हाई इट शुड बी डन, क्यों करना चाहिए, उसका कारण क्या है, व्हाट इज द नेसेसिटी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डूइंग दैट रिसर्च,
हाउ यू विल गोइंग टू डू, आप उसको कैसे करने वाले हो, व्हाट मेथडोलॉजी यू आर गोइंग टू फॉलो, कौन सा रिसर्च डिजाइन यू आर गोइंग टू फॉलो, what statistics you are going to apply, everything should be included in a research proposal. And what expect will your result, that is your hypothesis, what you are going to expect from your research which you are going to conduct. मतलब आप जो ये शोध करने वाले हैं, या जो रिसर्च स्कॉलर या जो संशोधक जो ये शोध करने जा रहा है, उसका परिणाम उसको क्या मिलेगा और उसका सिग्निफिकेंस सोसाइटी को क्या मिलने वाला है. सो अगर हम देखें कि व्हाट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, मतलब एक रिसर्च प्रपोजल जब हम सबमिट करते हैं या तैयार करते हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए. एक सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द इशू. अगर इशू नहीं होगा, दैट मीन्स व्हाट प्रॉब्लम डज योर रिसर्च एड्रेस, मतलब आपकी समस्या जिसके ऊपर आप रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हैं वो क्या होगा. इज इट, दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट यू टेक ample amount of time to finalize a problem. एक समस्या को निर्धारित करने के लिए जितना ज्यादा समय आप ले सकें उतना अच्छा है, उसको अच्छी तरीके से प्रॉब्लम को डिफाइन करना चाहिए. अगर आपका प्रॉब्लम, अगर आपका इशू सही तरीके से एड्रेस नहीं हुआ, तो आपको बाद में रिसर्च को कंडक्ट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है. देन रिसर्च डिजाइन, हाउ विल द रिसर्च अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव. जो आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हैं, या यानी आप क्या क्या कैसे आपका रिसर्च कंडक्ट करने वाले हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो रिसर्च डिजाइन जो है वो डिस्क्राइब करती हैं. अगर प्रॉपरली आपका रिसर्च अगर डिजाइंड है, तो आपको रिसर्च कंडक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. और थर्ड इंग्रेडिएंट जो एक रिसर्च प्रपोजल में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हमको ये देखना है कि व्हाट आर इट्स बेनिफिट, व्हाट विल बी द रिसर्च कंट्रीब्यूट. अमान, मैं जो रिसर्च करने वाला हूँ उसका कंट्रीब्यूशन in the field of I am physical educationist, so I'll talk about physical education. मेरे फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में उसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा, या मेरे सोसाइटी में उसको क्या कंट्रीब्यूशन होगा, या जिस एरिया में मैं रिसर्च कर रहा हूँ, whether it is physiology, whether it is psychology, whether it is test and measurement, whether it is related to particular sports, whether it is related to socio-economic status, या जो जिस एरिया के ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूँ उसका बेनिफिट जो है फिजिकल एजुकेशन में या सोसाइटी को क्या मिलने वाला. तो दीज आर द 3 प्राइम पिलर्स ऑफ व्हाइल राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल. इस चीज का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए. सो व्हाट रिसर्च प्रपोजल मेक्स यू, हम रिसर्च प्रपोजल क्यों लिखते हैं, रिसर्च प्रपोजल क्यों होना चाहिए. The number first step is it gives you a outline of your proposed research. आपको एक आउटलाइन मिल जाता है कि मुझे जो है या द रिसर्च स्कॉलर को जो है इसके आधार पे जो है मेरा शोध को आगे बढ़ाना है. तो इट गिव्स यू अ आउटलाइन सो दैट इट यू कैन इजीली कंडक्ट योर रिसर्च वर्क. देन प्रोवाइड योरसेल्फ विद इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट. आपको जो है आपके एरिया से रिलेटेड जो कॉन्टेक्स्ट है उसकी जानकारी आपको क्लियरली मिल जाती है उसमें. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दूं कि मैं किसी बैडमिंटन प्लेयर का स्पीड के ऊपर टेस्ट करना चाहता हूँ, उनकी स्पीड एबिलिटी. तो बहुत समय क्या होता है, लोग स्पीड मतलब एक ही टेस्ट है, दैट इज 50 यार्ड रन एंड वॉक. लेकिन अगर आप बैडमिंटन के साथ 50 यार्ड रन को कोरिलेट करेंगे तो उसका कोई तोड़ नहीं है, बिकॉज दे डोंट रन 50 यार्ड इन बैडमिंटन कोर्ट. तो यहाँ पे स्पीड चाहिए, लेकिन कौन सा स्पीड चाहिए, वी डोंट वांट लोकोमोटर स्पीड. हमें जो स्पीड चाहिए, वी रिक्वायर्ड रिएक्शन टाइम स्पीड. तो रिएक्शन टाइम का सही तरीके से एक्सप्लेनेशन आपके इस रिसर्च प्रपोजल में होना चाहिए. जब मैं आगे डिस्कस करूंगा इन चैप्टर 1 डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्म्स में, आप स्पीड ले रहे हैं, स्पीड में आप कौन सा स्पीड ले रहे हैं, दैट इज रिएक्शन टाइम, इस प्रकार से. तो इट गिव्स यू ए इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट कि आपको सही तरीके से आपका रिसर्च आगे बढ़े. इट जस्टिफाई योर रिसर्च, you justify your research.
through statement of the problem, through significance of the study, through objective of the study. इससे आप आपके जो रिसर्च वर्क आप कंडक्ट करने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू कंडक्ट, यू जस्टिफाई योर रिसर्च, देन यू आर बी क्रिएटिव, आप थोड़ा क्रिएटिव हो जाते हो, because you thought of different type of ways and means to conduct your research, so that फाइनेंशियल एप्लीकेसी उसको भी हमें देखना है, टाइम ड्यूरेशन को भी आपको देखना है, वेदर डाटा कैन बी कलेक्टेड वो चीज को भी देखना है. तो यू बिकम्स बिट क्रिएटिव टू हाउ टू एडजस्ट एवरीथिंग एंड मेक इट इन द विद इन द डिलिमिटेशन ऑफ योर स्टडी. थिंक थ्रू योर एक्सपेरिमेंट्स, आप जो है आपके एक्सपेरिमेंट के थ्रू सोचना शुरू कर देते हो कि व्हाट विल बी द आउटकम, किस प्रकार से हमें आउटकम मिलेगा और इसका बेनिफिट हमें क्या होगा. तो यू गो थ्रू वेरियस रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, आप बहुत से रिव्यूज आपके स्टडी से रिलेटेड उसको रिव्यूज करते हैं, उसमें उसने कौन सा मेथोडोलॉजी यूज किया है, कौन सा टेस्ट लिया है, कौन से स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस उसने यूज किया है और उसको कंक्लूजन क्या मिला है. एंड इफ देयर इज समथिंग फिशी या कोई चीज ऐसे लग रहा है जिसका कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं मिला है, तो क्या उसके ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं. वेदर द कंसर्न ऑथर हैज गिवन एनी recommendation that certain studies can be done in this study in the area which he has not conducted. तो आप जो है आपके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में काफी सोच विचार कर सकते हैं. एंटिसिपेट पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, आप पोटेंशियल प्रॉब्लम्स जो अगर आपने एक स्टडी को सिलेक्ट किया है, वो स्टडी को सिलेक्ट करने के बाद उसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती है. नंबर वन, वेदर आई विल बी एबल टू कलेक्ट द डाटा. I am giving you a simple example कि comparative study of Indian and international volleyball players or football players or any sports in related to their physical fitness and other parameters components. आपको इंडियन प्लेयर के तो डाटा मिल सकते हैं, from where you will get data from international player. So while writing a research problem, it becomes very easy कि मैंने तुरंत लिख दिया कि there is a comparative study between national and international player. But whether I will be able to collect data from the international players, so you can anticipate the potential problems. You have taken certain parameter, कोई एक पैरामीटर लिया जिसके टेस्ट के लिए आपको हाईली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है. फॉर एग्जाम्पल, योर ब्लड लैक्टिक एनालिसिस आपने ले लिया कि ब्लड, एक एथलीट को हम दौड़ा रहे हैं, थकने के बाद उसके ब्लड में कितना लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है. फॉर दैट यू रिक्वायर्ड ए लैक्टिक एसिड एनालाइजर. क्या आपके पास वो लैक्टिक एसिड एनालाइजर है जहां पे आप रिसर्च कर रहे हैं? क्या आप उसको अवेल कर सकते हैं? अगर नहीं अवेल कर सकते हैं तो दैट बिकम्स योर पोटेंशियल प्रॉब्लम. तो इस प्रकार की समस्याएं जो रिसर्च स्कॉलर को अपने रिसर्च के दौरान आ सकती है, इन सब का भी एनालिसिस जो है हम रिसर्च प्रपोजल जब हम प्रेजेंट करते हैं उस समय स्टडी के माध्यम से उसको एलिमिनेट कर सकते हैं. एंटिसिपेटिंग रियलिस्टिक टाइम, जो टाइम पीरियड है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीएचडी में 5 साल का अगर आपका ड्यूरेशन है तो क्या आप 5 साल के ड्यूरेशन में उस स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं. इफ ए स्टूडेंट इज डूइंग dissertation, he has to complete his dissertation within the stipulated time framework. तो क्या वो stipulated time framework के अंदर अपना स्टडी को कंप्लीट कर सकता है? इन सब चीजों को जो है आज इजीली वी कैन इवेल्युएट एंड देन वी कैन प्रोसीड, so that we don't have any problem while we are conducting our research problem. So this what research proposal makes you to do. Then when I am talking about research proposal, तो रिसर्च प्रपोजल जब हम सबमिट करते हैं in the form of a blueprint, तो उसमें 3 कैटेगरी ऑफ मटेरियल हम उसमें यूज करते हैं. Those material are, number 1, it is a preliminaries, number 2, the main body of the proposal, and the number 3 is your reference material. जब हम रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिनॉप्सिस,
तो उसके 3 खंड होते हैं, 3 भाग में हम उसको डिवाइड करते हैं. नंबर 1 इज प्रिलिमिनरीज, ठीक है. नंबर 2 इज मेन बॉडी ऑफ द प्रपोजल एंड नंबर 3 इज रेफरेंस मटेरियल. तो लेट अस सी, जब हम रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट करते हैं तो प्रिलिमिनरीज के अंतर्गत क्या क्या आता है. द प्रिलिमिनरीज में सबसे, अगर आपने कभी रेफर किया होगा किसी का रिसर्च प्रपोजल, तो टाइटल पेज के ऊपर एक ब्लैंक पेज होता है. इट इज अ ट्रांसपेरेंट पेज, है ना. इट इज कॉल्ड ए फ्रंट फ्राई लीफ. इट इज अ ब्लैंक लीफ फॉर ब्यूटी. बेसिकली उसका कोई सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जब हम कोई प्रेजेंटेशन करते हैं तो प्रेजेंटेशन शुड बी गुड, तो वो अच्छा दिखना चाहिए. इसलिए हम जो है नियर अबाउट 100 माइक्रॉन्स और सो का हम उसमें एक ब्लैंक लीफ यूज करते हैं, जिससे कि आपका टाइटल पेज को हम ठीक से रख भी सकें और अच्छा भी दिखे. Is consist of a thin paper or transparency to cover the title page so that the printer matter of the title page can be seen easily, ताकि आप जो है आपका टाइटल पेज को जो है आसानी से देख सकते हो. Then comes your title page. See, different university follows different type of format. Different institution follow different type of format. But the format contain all the things which I am going to discuss now. The title page में सबसे पहला जो है, it is a single page containing the title of the thesis. आपका thesis का जो है वो टाइटल सबसे ऊपर होता है, and which should be very concise, बहुत एकदम एंड क्लियर. बहुत लंबा बहुत चौड़ा टाइटल नहीं होना चाहिए. एंड द नेम ऑफ द रिसर्च स्कॉलर, उसके बाद जो रिसर्च स्कॉलर रिसर्च कर रहा है उसका नाम होता है. दिस कैन बी अप एंड डाउन डिपेंडिंग अपॉन the format which are being used by different type of university. Different university has its own format. The name of the supervisor or guide, जो गाइड है उसका नाम या होता है. कई यूनिवर्सिटी में दो दे डोंट टेक द नेम ऑफ द गाइड एट द टाइटल पेज. सो दिस इज व्हाट फॉर्मेट आई एम फॉलोइंग इज ऑफ आवर यूनिवर्सिटी. तो कई यूनिवर्सिटी में जो है सुपरवाइजर का नाम नहीं होता है, बट बेसिकली इट कंटेन्स द स्टेटमेंट ऑफ सबमिशन, इंस्टीट्यूट रिसीविंग द प्रपोजल, डिग्री फॉर विच द प्रपोजल इज प्रेजेंटेड एंड द मंथ एंड ईयर ऑफ सबमिशन. इसके बाद जो है स्टेटमेंट ऑफ सबमिशन होता है, whether it is a thesis, whether it is a dissertation, or whether it is a research project. क्या है? If it is a research project, you write research project. If it is a dissertation, you write dissertation. If it is a thesis, because dissertation is not a complete requirement for any degree. It is a partial fulfillment in lieu of any subject. But thesis is a complete requirement for the award of degree. This is the difference between dissertation and a thesis. So, it to whom you are submitting? You are submitting to Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati, or through Degree College of Physical Education, HVPM, Amravati. So, from to whom you are submitting, from which institution you are submitting the proposal, that you have to write. So, in case this is in case of when you are writing a research report, जब आप synopsis लिखेंगे, then you have to write it is a research proposal or a synopsis. यहाँ पे जो आप एक thesis करके देख रहे हैं, ये thesis के जगह वो synopsis रहेगा या research proposal रहेगा. Then the month and year of your submission, कौन से महीने में और कौन से साल में आप सबमिट कर रहे हैं, all these things comes under your title page, right? In the next comes your table of content. Table of content में आपका जो है, I will be showing in my next slide. These are the 4 points which are been included in your table of content. Number 1 is chapter heading, main heading and subheadings. उसमें आप लेफ्ट साइड में चैप्टर का वो लिखते हैं, chapter 1, then content, and then page number. The heading of table of content should be typed in capital letter and center between the right and left margin. I will be talking about the how to write a research proposal. What is the possible framework while writing a research proposal, that I will discuss later. The word
Chapter and page should be double spaced and placed in the left and right extreme. Here I am showing you how table of content is to be written. In the top, you will write a chapter name. Here you will write the page number. Chapter 1, there is a main heading is introduction, and the subtitles are your statement of the problem, then delimitation, then limitation, then definition and explanation of terms and objective of the study. Then you have a page number. Then chapter 2, review of literature. Then you have a page number. Then chapter 3, it will be methodology, and under methodology, what are the content of the methodology. Everything is been included in this. That is, here on the right side, you write a page number. Then in while submitting a synopsis or research proposal, there is not much discussion about chapter 4 and 5, because chapter 4 and 5 are written only after conduct of your research work. So mostly in a synopsis, we write only chapter 3. Chapter 4 and 5, we write that on the basis of the collection of data, the analysis of data will be made and result of the study will be done. That I will discuss later. And then your bibliography, which will be you written your page number. Then this is the most important part while writing a research proposal. That is the main body of your proposal. The main body of your proposal usually comprises of 5 chapters, right? Introduction, review of related literature, then methodology, or in a certain university, they write procedure, then analysis of data and result of the study, and summary conclusions and recommendation will be your 5th chapter. Let us discuss what we include in our introduction. Basically, the introduction include the introductory statement of the problem area that indicate the importance and the purpose for which the study has been taken. The purpose, need, and scope of the study is presented logically so that the reader can develop a clear concept of the problem. This is very important while writing a research proposal, because here, while writing an introduction, you are introducing your research problem. Make it a note. You are introducing your research problem. Otherwise, what happened in most of the cases I have seen, the research scholar, if he has taken a comparative study of physical fitness of low and high performance cricket players, so what they do, they write the historical aspect of cricket. क्रिकेट कब शुरू हुआ था, कैसे खेला जाता है, what is its rules and regulation, everything they write in introduction, which is not necessary. You have to introduce your topic in this area, and while introducing your topic, you should be very thoughtful in expressing your views about the purpose, why I have taken the study. That should be the main part of your introductory part. Then, what is the need? What is the scope? You can refer certain reviews of related literature which are very critically related to a study, that certain author has conducted a study on this and this parameter, and on the basis of this it has been seen that there is a discrepancy, because some author says that the performance improves, some author can say that the performance does not improve. So there is a gap of learning resources. वहां पे जो है, जो रिजल्ट है या जो एनालिसिस है, जो फाइंडिंग है, उसके बीच में गैप है. So hence I have taken this study to find out whether there is really any significant difference between the low and high level cricket players. So you have to focus on the content of your topic. जो आपका स्टेटमेंट आपने दिया है, जो आपका स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है, that should be included in the topic, and there should be some queries, and on the basis of that you conclude with the introduction with a note that hence the research scholar has taken the study
to compare the effect high and low fit, or yeah, high and low level cricket players as far as their physical fitness is concerned. तो हमें जो है हमारे टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है. We don't have to introduce cricket because cricket everybody knows what it is. That is not a part of your topic. That is one of the aspect. So you have to study thoroughly what I am going to do in my research. What are my areas? What are my parameters which I am going to study? What are my variables? Those variables are to be discussed in the introductory part. The other part of the introduction includes the statement of the problem that I will discuss later on, then the delimitation, then the limitation of the study, then it hypothesis, definition and explanation of terms, significance of the study, objective of the study, and budget and time schedule. These all things should be included in your introduction. So let us see what the statement of the problem means. Here, while writing the statement of the problem, you write your problem in a statement form. That is the purpose of the study should be stated clearly and concisely. It must indicate exactly what investigator intends to do. Right? For example, here my topic was comparative study of selected motor fitness component, anthropometric measurements, and playing ability of soccer players in Vidarbha. This was my topic. So while writing this topic in statement form, I should write with this example that the purpose of the study will be. Here I have written was because I have taken it from my research report. So while writing a research proposal, one thing you should be very clear that research proposal should always be written in future tense. एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं तो रिसर्च प्रपोजल को हमेशा भविष्य काल में लिखा जाता है. द टेंस ऑफ writing the research proposal is future tense. So it should be will be. Will be to compare the selected motor fitness components, anthropometric measurements, and playing ability of soccer players of Vidarbha region. Friends, you should be very clear that research proposal and research report writing, there is a difference. Research proposal is written in future tense, whereas research report is written in past tense. Why this difference? Because while presenting a research paper, you are going to do your research. You have not done your research. In future, you are going to do your research. And while writing a research report, that means you have completed your research work. Your all aspect has been completed, and now you are presenting your research work in a research report form. So it is a past tense. तो यहाँ पे जो will be है, that changes into was. The study was conducted. Right. In the statement of the problem, when I'll discuss tomorrow while writing a research report, my statement will be the same, that the purpose of the study was to compare, because I have already completed my research work. And in research proposal, I am going to do my research work in near future. So it should be in future tense, will be. This is the major mistakes done by most of the candidates while presenting their research proposal and research report. Then delimitation. Delimitation means in this the researcher reduces the problem to a workable size, set the boundary by limiting its scope. हम जब रिसर्च करने जाते हैं तो जब रिसर्च करने जाते समय हम लोग हमारा जो शोध प्रबंध है उसको एक दायरे में सीमित कर देते हैं कि whatever research is been done is done within the limitation of this. इस सीमाक दायरे के अंदर हमने किया है. So whatever findings we have got is on the basis of the delimitation of the study. So it becomes clear. The basic thing is, because if the sample size is small, then there is a possibility अगर आप दो बार एक कॉइन को
टॉस करेंगे तो हो सकता है एक बार हेड आए एक बार टेल आए, तो प्रोबेबिलिटी इज 50%. बट इफ यू डू फॉर 50-60 टाइम्स, द वेरिएशन में चेंज. हो सकता है आपको 10 टाइम्स हेड आए और 40 टाइम्स टेल आए, right? So we delimit our study, and the delimitation is done on the basis of total number of subjects. We delimit our study that the study will be conducted on hockey players. The total number of hockey players will be either 40 or 60 or 100. So your study will be delimited to that parameter only. Their age group, what will be the age group of the subjects you have selected? If it is experimental study, what will be the age group? Whether it is a junior level, whether it is a senior level, whether it is adolescent period के ऊपर ले रहे हैं या senior citizen के ऊपर आप study कर रहे हैं, तो you have to delimited the age of the subject. Then gender, sex, whether you are going to conduct your research for male or for female or both, that you have to delimit. Then the number and types of variables. What are the types of variables you are going to take? For example, if you are taking on a physical fitness, I am taking this so that it can be easily understandable. आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट ले रहे हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपने स्पीड एज ए वेरिएबल लिया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया. तो स्पीड वेरिएबल में आप कौन सा टेस्ट कंडक्ट करेंगे वो आपको डिफाइन कर, दैट इज अ लोकोमोटर स्पीड, दैट इज अ रिएक्शन टाइम. आप किस प्रकार का स्पीड ले रहे हैं, वेदर इट इज अ एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, अगर आप स्ट्रेंथ ले रहे हैं, वेदर इट इज अ मैक्सिमम स्ट्रेंथ, because it has a different test to test all these parameters. So that has to be explained in this. अगर आप cardiovascular endurance test conduct कर रहे हैं या cardio respiratory endurance conduct कर रहे हैं, तो what test you are going to conduct, what variables? So it is speed, it is strength, it is flexibility, it is coordinative ability. All these variables has to be explained. If you are taking physiological parameters, whether it is a heart rate, whether it is a respiratory rate, whether it is a what do you say, your oxygen intake capacity, yeah, hemoglobin content, yeah, whatever variable you are going to take, that has to be written in this. If it is a psychological test, whether you are going to take a test on anxiety or aggression or whatever, uh, coordinative ability, या टू हैंड आई कोऑर्डिनेशन टेस्ट, जिस प्रकार का भी आप टेस्ट ले रहे हैं, ये सारे टेस्टों का वेरिएबल्स का उल्लेख जो है ये डिलिमिटेशन के अंदर आपको करना है. देन अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज डाटा कलेक्शन टाइम एंड मंथ. It is very important. The reason I am telling you, if we have a bodical biorhythm, so early in the morning when you get up, after some time you, as per your daily routine, you feel fresh. In the afternoon you have a drive toward hunger. Those who have a habit of sleeping in the afternoon, they have a drive towards sleep. Then again in the evening you feel fresh. There is a temperature variation from early morning to evening. All those things affects your performance level of your subject. So you should be very specific while delimiting that the data should be conducted in the morning hours, whether the data is to be conducted in the evening hours. Then in the month, because every month has a temperature variation. If you are conducting a data in the month of September, October, November, December, or January, February, it is cold. And if the same subject are repeating the same variable in the month of June, May, June, there is an extreme hot environmental condition. So it affects their performance. So you have to explain, you have to delimit whether which time you are going to collect your data and in which month you are going to conduct your data. Then if you are using a questionnaire method, then whose questionnaire you are going to use, आप किसका क्वेश्चनियर आप यूज कर रहे हैं, that you have to explain in your delimitation. Because anxiety questionnaire
were made by various psychologists. So which psychologist questionnaire you are using, that you have to mention in delimitation, right? And suppose if you are making your own questionnaire, then in the administration of questionnaire, you have to explain certain things that I will discuss in later on, right? कि आपने trial run लिया है क्या, whether you have made a initial writing of the questionnaire, whether you have done trial run with expert, with subject, then you have evaluated it, you have eliminated the unwanted questions, and then final writing of the questionnaire. Whether you have calculated its reliability or validity or not, that is also important. Then you have to find out its reliability and validity, because the questionnaire which you are using, whether it is able to test what you want to know, that is also most important. Okay, so in delimitation we take all these areas into consideration. Then limitation means the factor which might affect the study and which are beyond the control of research scholar are mentioned under this heading. ऐसे बहुत से factors है, there are various factors which might affect your study and which are beyond your control. For example, there are social factors. Some people, when you are testing the subjects, some subjects are from lower economic class, some are from high economic class, some are from middle economical class, so it also affects their performance. Then religious, different religion has different beliefs, so certain beliefs also affects your performance of the subjects while you are collecting the data. Then environmental variation, hot environment, cold environment, hot dry environment, hot humid environment, altitude, everything affects the performance. So while we are conducting a data, or suddenly the environment changes, there is a temperature variation, it affects the performance of the your subject. So those things should be taken into consideration. Then health condition of the subject, when you are conducting a data, योर सब्जेक्ट माइट बी अंडर प्रेशर कि अगर मैं ये टेस्ट नहीं दूंगा तो मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे, या आई विल नॉट बी सिलेक्टेड फॉर सर्टेन पर्पस, तो इवन दे आर नॉट वेल दे गिव डाटा. So that also affects your data collection, the performance of the subjects. Then dietary habits of the subjects, what type of diet the athletes or the sportsman is taking, it also affects the performance. For example, you are going to conduct a test at 10 a.m. and just before 10 a.m., 9:45, somebody had his heavy breakfast and reported to you to give his data test. Will it not be affecting his performance? Definitely it is going to affect his performance. So these are the various things which are not in your control, you might not be knowing, these are beyond the control. So such things we take into consideration as a limitation. That's why when we write the hypothesis or anything, we take the level of significance at 0.05 level. That means 99.95% we give a chance that our data is true. Only 0.05 we give that there may be certain error, and those error can be due to these limitations. Then you write the hypothesis. Then what is hypothesis? Hypothesis is a hunch or guess which form the basis of the investigation for the research scholar. It acts as a guideline throughout the investigation. So while you are writing a hypothesis, it gives you a guideline. It provides you a guideline how you are going to proceed in your research work. It is a tentative prediction. You tentatively predict that there may be a significant difference in the performance level after giving certain experimental treatment. आप कोई भी experimental treatment दे रहे हैं, कोई भी training आप दे रहे हैं,
उसके बाद जो है उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिलने की संभावना है. दैट यू टेक ए हाइपोथेसिस and explain the relationship between two or more variables. There we explain the relation between two or more variables. The one thing is very uh, important when you are writing a hypothesis, and after you complete your research work, that hypothesis is not to be proved, rather to be tested. One thing, this I have gone through various research work, that most of the research work I don't find that the hypothesis is rejected. Hypothesis is always accepted. So you do not prove. आप डाटा मॉड्यूलेशन नहीं कीजिएगा, बोगस डाटा मत बना के आपके हाइपोथेसिस को प्रूव कीजिएगा, because in social science it may not have a significant effect. But in medical science, if I'll say that a crocin can cure cancer, and my hypothesis is yes, it will cure cancer, and if it does not, if my research does not go those findings, I'll try to manipulate my data and say yes, crocin cures cancer. तो जो पेशेंट के क्योर होने के चांसेस है वो भी बहुत जल्दी थैंक यू बोल के चले जाएंगे. So you don't need to prove it. You in the discussion of hypothesis you write what are the basic reasons why you have got these results. I will tell you my experience while I was doing my PhD thesis. I was doing on biorhythm. तो मेरे इसमें जो लेट स्लीपिंग ग्रुप था उन्होंने एक्यूरेसी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया. बट इफ आई एम मेकिंग यू टू बी, I am not allowing you to sleep for at least at night 2 to 3 a.m. your body rhythm will be disturbed and आप जो है अच्छा परफॉर्मेंस नेक्स्ट डे मॉर्निंग नहीं दे पाएंगे. तो आई वेंट टू माय गाइड एंड आई सेड सर दिस इज व्हाट आई हैव गॉट इन माय रिजल्ट, कि जो लेट ग्रुप था उन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया और जो नॉर्मल स्लीप टाइमिंग में सही समय में सो गए थे उनका परफॉर्मेंस सबसे खराब आया. तो ही सेड नो, यू आर नॉट गोइंग टू चेंज योर डाटा, आप स्टडी करो, रिव्यू करो, लिटरेचर रिव्यू करो. Then I gone through and one encyclopedia, and there I got that Hitler used to sleep only for 45 minutes. और वो 45 मिनट्स सोने के बाद भी सारा दिन अच्छे से काम करता था. How it is possible? Then I enquired those subjects who were in late group. So I have found most of the students, they used to study late night. 1-1.5 बजे तक वो स्टडी करते थे. So their biorhythm was not disturbed. So in the discussion of hypothesis, I have written all these things and it was appreciated by the examiner. The reason is I had not proved my hypothesis. My hypothesis was rejected. But on the basis of that hypothesis, I've laid down the explanation, and it has given a scope for further research scholar to study in detail in those area. वो उस रिसर्च स्कॉलर को आगे जो स्टडी कर रहा है उससे रिलेटेड उसको एक स्कोप मिल जाता है कि मैं इसके ऊपर स्टडी करके देखूं कि वाकई में लेट ग्रुप का अच्छा परफॉर्मेंस आता है कि नहीं आता है. Right. And another important thing is it is not necessary that there should be hypothesis in each and every study. Okay. Then comes in the research proposal, there's a definition and explanation of terms. It is also very important. Why, I'll tell you. Definition and explanation of those terms which are not generally understood or those terms which could be misinterpreted are to be included in these headings. As I have just now explained to you, that if I am testing a speed of a badminton player, speed ability of the badminton player, I have to explain under this definition and explanation of term what type of speed I am going to test, right? What
type of speed I am going to test as far as badminton player is concerned. For a sprinter, the speed requirement is locomotor speed because he runs 100-meter dash. But as far as badminton and table tennis player is concerned, they also require speed, but that speed is related to the reaction time of hand, reaction time of their foot. That is also a speed, right? So under this, you have to explain the various terms. You write different definitions given by different authors. And at the end of every definition, you give a justification that the definition given by so and so author is most appropriate for the purpose of the study. तो ये आपके स्टडी को और भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट वैल्यू देता है कि रिसर्च स्कॉलर हैज गॉन थ्रू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ दिस वेरिएबल and different authors has explained different this variable in different way, and the best suited explanation by such and such author is been taken for the purpose of the study. So the operational definition क्या करता है? It helps the reader to explain exactly how researcher is going to use using certain terms. वो जो है रिसर्चर जो आगे आपका पढ़ने जा रहा है या जो एग्जामिनर है उसको क्लियर व्यू देता है कि what aspect you are going to conduct or test. Then what is the significance of this study? The research has to basically explain the contribution of the study to the field of knowledge. So whatever topic you have taken as a research problem, what is the significance? How it is go? What are its implications in near future? How it is going to help our field of physical education or to the society, and how it will help or contribute in the field of knowledge. That is most important, that you have to write in this under this head. Then the last part of introduction is your objective of the study. That means the objective are specific steps you will take to achieve your aim. What is our aim? Aim is what we are going to do. हमारा aim जो है, that is the last part after getting the result. What I am going to get, that is your aim, and your objective will be how I am going to get. मैं उस aim को किस प्रकार से achieve कर पाऊंगा. That is how. That should be the objective of the study. How you are going to achieve the significance of the study. The research objective are goals to be achieved by conducting a research. You set different goals during your course of research work. How you are going to achieve those goals at different times. The objective should be logical and coherent. It should be feasible. It should be realistic, considering the local condition. Phrased to clear the meet the purpose of the study. That should help to clearly meet the purpose of the study. आपने study जो लिया है उसका purpose क्या है. Objectives of the study. How the objective of the study is to be stated. Now, while writing a research proposal, how you will present your objective, that is also most important. Objective should be stated using action verbs that are specific enough to be measured, right? For example, if I have taken a comparative study of high fit and low fit hockey players, so while writing the objective, I will write the to compare. I will use the term compare to compare the physical fitness of high and low fit hockey players, or to determine the effect of certain training on the fitness level of football players, or to verify whether the training has any significant effect on the players, or to calculate
or to understand or to believe. These are the terms we use. These are the action verbs we use while writing a objective of the study: to determine, to compare, to verify, to calculate, to understand, to believe. So the statement while writing your objective should start with these action verbs. Then last one is a budget and timetable. It is very important as far as when you are conducting a dissertation research work. Your time period is very less. It is a 6 month. Basically, it is a 4 month or 3 month duration. So, while preparing a research proposal, while selecting a topic or a research problem, you should take into consideration whether the topic which I have taken can be completed within this stipulated 3 months time period or not. If it is not possible, don't take such type of studies. Whether the financial requirement for the conduct of this research work is feasible for the research scholar is also has to be taken into consideration. क्योंकि every while you're conducting a research work, there are certain financial implications are there. आपको कुछ खर्चा होता है, फाइनेंशियल खर्चा करना पड़ता है, तो क्या वो खर्चा पॉसिबल है आप लोगों के लिए? If it is yes, it can be done, then you go ahead. If it is not possible, then don't go ahead. For example, I have said कि you have to calculate the blood lactic of a football player आफ्टर गिविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग लोड. एक ट्रेनिंग लोड देने के बाद आप उसका ब्लड लैक्टिक कितना हुआ है उसको मेजर करना है. उसको मेजर करने के लिए आपको ब्लड लैक्टिक एनालाइजर चाहिए. क्या ब्लड लैक्टिक एनालाइजर आपके इंस्टीट्यूट में या आपका रिसर्च वर्क जहां आप कर रहे हैं वहां पे अवेलेबल है? इफ इट इज अवेलेबल, वेदर उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट है supplements key, whether those strips are available, whether that instrument is available. If it is not available, what is the cost factor involved for procuring that equipment? उस equipment को मैं खरीदना चाहूँ, नहीं मुझे इसी में करना है, मैंने सोच लिया है और मैं उसको खरीदना चाहूँ, whether it is available in India, whether it is available, for example, you people are from Amravati, whether it is available in Amravati. अगर अमरावती में अवेलेबल है तो आप जाके वहां से ले सकते हैं. अदरवाइज यू हैव टू face additional burden as well as its transportation is concerned, its courier cost is concerned. अगर आप विदेश से मंगा रहे हैं तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा. तो that is not at all possible. Whether that much financial I am strong, I have a financial backup support from my family to bear all the expenses while doing my research work. तो ये सब बजटिंग आपको देखना पड़ेगा. उसके बाद ही आप रिसर्च प्रॉब्लम को जो है सिलेक्ट कीजिए. एंड देन योर टाइम शेड्यूल. आप जो है स्टिमुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर उस स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, so everything is to be mentioned under this head. So after chapter 1 in the research proposal, it comes a chapter 2 which is review of related literature. In this chapter, we review the various literature which are critically and allied related to our study. Basically, we should take it into consideration only those literature which are critically related to our study. So, it may also include the opinion of certain authors pertaining to the study. If you have taken certain study and while reviewing a study, you will find that certain author has given his certain opinion that this study can be conducted while by taking so and so other variables or by taking other genders
or other level of performance of the players, then you should take those opinion also in review of related literature. Right. Related literature should include brief statement of methodology used and finding of the study. So while taking a review of related literature, you should take it into consideration that Mr. So and so, I'll take my name, that Dr. Tapan Datta has conducted a study on so and so, and as for the study, he has taken so and so subjects, so and so variables. He has used such methodology. He has used certain statistics, and he got certain conclusions. So everything is to be included in a very summarized form in a review of related literature. कि वो स्टडी किसने किया, कौन से साल में किया, उसका टॉपिक क्या था, कितने सब्जेक्ट्स उसने सिलेक्ट किए थे, कौन कौन से वेरिएबल्स उसने लिया था, और वो वेरिएबल्स के ऊपर कौन से टेस्ट कंडक्ट किए थे, वो टेस्ट किस प्रकार से कंडक्ट किए थे, कौन सा स्टैटिस्टिक्स उसने यूज किया था, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किया था, और उसका परिणाम क्या उसको मिला, व्हाट रिजल्ट ही गॉट, दैट एवरीथिंग शुड बी इंक्लूडेड इन द रिव्यू ऑफ लिटरेचर. While writing your review of related literature, there is a certain procedure we follow. Right? It should be in chronological order, but in a descending year. The latest review hai. For example, now we are in the era of 21. In a month, we will move on to 22. So your first review should be if you get any review from the year 2021, you take it into consideration. Then 20, then 19, then 18. So the old reviews should be mentioned at the last. The latest reviews, which has a latest technology they have used, latest methodology they have used, are to be included in the here. Right? So why we should take review of related literature? It convinces the reader that the research area is significant, important and interesting. हम जब रिव्यू करते हैं और जब हमारा कोई रिसर्च, कोई दूसरा रिसर्च स्कॉलर स्टडी करता है, तो इट गिव्स अ इंप्रेशन टू द रिसर्च स्कॉलर कि वॉट एवर रिव्यू ही हैज कलेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ हिज स्टडी, बिकॉज इट गिव्स ए गाइडलाइन, ये आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि कौन सा मेथोडोलॉजी दैट अदर रिसर्च स्कॉलर हैज यूज्ड, what statistics the other research scholar has used, what variables he has taken, why he has taken that study. It helps you to provide you a guideline to formulate your methodology. Okay, so it becomes significant, important and interesting. Convince the reader that we should not be completely satisfied with the existing research on the topic. Whatever topic he has taken, if the review of literature is not there, so it does not support your research problem. So that does not satisfy the research scholar. It gives the impression that research has been not conducted in a proper manner. Convince the reader that your research will fill some important interesting gap or address some important limitation or deficiency. Explain and justify your research hypothesis and idea. So, while you are reviewing a related literature, it conveys the research scholar that if there is certain gap between the findings of the study which has been already done by various authors, it gives you an area and scope to complete your research, to take on that research. It address some important limitations or deficiency. अगर उसके रिसर्च में कुछ deficiency है, कुछ limitations हैं, तो you are able to understand what limitations he got while conducting his research work, which was beyond the control of that researcher. So certain type of limitation may also occur while you are taking your research work. Okay, and it justify
and explain your research hypothesis and ideas. Okay, what hypothesis you have done, what are the ideas behind taking your research problem, it justifies. After review of literature in your research proposal, the third aspect is your chapter 3, which is methodology, which is the most important. Methodology explain the procedure that will be used to achieve the objective. आपके जो रिसर्च है, वो रिसर्च और टॉपिक जो आपने लिया है, उसके उद्देश्य क्या है, उन उद्देश्यों को एक्सप्लेन करने के लिए आपका ये मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सपेरिमेंटल स्टडी, अगर कोई आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी ले रहे हैं और स्टेटस स्टडी अगर आप ले रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल स्टडी एंड स्टेटस स्टडी. स्टेटस स्टडी में आप दो ग्रुप के बीच के स्टेटस का कंपैरेटिव स्टडी करते हो, लेकिन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में क्या, यू इम्प्लीमेंट सर्टेन टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसीजर, और वो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर का आपके क्या लेटर ऑन इफेक्ट होता है, उसको यू आर गोइंग टू फाइंड आउट. So when you are taking experimental or status study, the first thing which comes under methodology is selection of subjects. Under selection of subjects, you write that how many subjects you have taken for the purpose of the study. Whether it is a 50 subjects, whether it is 60 subjects, whether it is 100 subjects. Then the level of the subjects, whether they are junior level players, whether they are senior level players, whether they are professional players, or they are from any institution, they are from BP8 class, they are from MP8 class, or they are from BPE class. कौन से क्लास कैटेगरी का आप सब्जेक्ट इसमें सिलेक्ट कर रहे हैं, that you have to mention. The third thing you have to mention in selection of the subject is the age group. What will be their age group? Whether they are 17 to 25, the age group should, the difference between the age group in your selection should not be more. For example, 10 to 20 years, right? So if you have taken a subject from 10 to 20 years, there is a vast difference, and as a result, their parameters also changes. Their physical parameters, their physiological parameters, their psychological parameters. The 20 years are more matured than 10 years. So the age gap should be less, 3 to 4 years. It should not be more than that. Because if the age gaps while selecting a subject is more, it will affect the result of your study. That you should take it into consideration. क्योंकि एक 10 साल के बच्चे की सोचने की क्षमता, एक 10 साल के बच्चे की फिटनेस लेवल, एक 10 साल के बच्चे की साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, उसका फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट, एक 20 साल के एडोलसेंट बच्चे के साथ, युवा के साथ बहुत डिफरेंट होगा. दैट यू हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन. क्योंकि उनका साइकोलॉजिकल पैरामीटर, उनका फिजियोलॉजिकल पैरामीटर, उनका फिजिकल पैरामीटर, उनका इमोशनल पैरामीटर, ये सारे पैरामीटर 10 साल के बच्चे से काफी अच्छा होगा. तो देयर इज ऑलरेडी ए डिफरेंस. तो यू विल ऑलरेडी फाइंड अ डिफरेंस when you are comparing age group 10 to 20. So it should be age group 10 to 13, or 15 to 17, or 17 to 20. So that have a significant value for that. So all these things you have to take into consideration while writing selection of subject. And while writing this, you should also take into consideration that it should be in future tense. The subject selected for the purpose of the study will be 60. The age group of the subjects will be ranged between 70 to 20 years. The performance level of the subject will be junior level or senior level. It should be in will be. भूतकाल में हमको उसको लिखना है. Then criterion measures. For example,
आप अगर फिजिकल फिटनेस कंपैरिजन के लिए आप ले रहे हो फुटबॉल प्लेयर और वॉलीबॉल प्लेयर, इट इज ए स्टैटिस स्टडी कि फुटबॉल प्लेयर के फिजिकल फिटनेस और वॉलीबॉल प्लेयर के फिजिकल फिटनेस के बीच में क्या डिफरेंस, वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस और नॉट, बिकॉज वन इज अ फील्ड गेम, अनदर वन इज कोड गेम, राइट। तो इनका अगर आप पैरामीटर स्टडी करना चाहते हैं तो आपको पैरामीटर उसके हिसाब से कौन सा टेस्ट आप कंडक्ट करेंगे वो आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ को मेजर करने के बहुत से टेस्ट है, राइट। देयर इज ए स्टैंडिंग ब्रॉड जंप भी है लेग स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, वर्टिकल जंप भी है स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, एजिलिटी को मेजर करने के लिए शटल रन भी है, सीमो एजिलिटी टेस्ट भी है। तो किस प्रकार का टेस्ट आप कंडक्ट कर रहे हैं दैट यू हैव टू मेंशन इन क्राइटेरियन मेजर्स। स्पीड मेजर कर रहे हैं तो स्पीड को मेजर करने के लिए भी डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट है। देयर इज ए 50 यार्ड रन एंड वॉक टेस्ट है, देयर इज ए टाइम टेस्ट है कि 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5 सेकंड में आप कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। तो दैट यू हैव टू क्लियरली मेंशन इन क्राइटेरियन मेजर कि आपने जो वेरिएबल लिया है उस वेरिएबल को मेजर करने के लिए आपका कौन सा क्राइटेरिया ऑफ मेजरमेंट होगा, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया यू हैव टेकन वेरिएबल स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ का क्राइटेरियन मेजर आपने लिया है वर्टिकल जंप, ओके। सो द क्राइटेरियन मेजर विल बी वर्टिकल जंप। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट, तो आपने ये जो क्राइटेरियन मेजर लिया है तो उसको आपको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सबसे पहले आता है द पर्पस, व्हाई यू आर गोइंग टू कंडक्ट दिस टेस्ट। देन इक्विपमेंट एंड सप्लाईज, उस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट यू आर गोइंग टू टेक, दैट आई विल एक्सप्लेन टुमारो because it is quite similar, only thing is here it is in future tense, there it is in past tense. Then procedure, किस तरीके से आप उस टेस्ट को कंडक्ट करेंगे, the entire procedure is been explained. Then your result, आप वो जो रिजल्ट है वो कैसे निकालेंगे, वेदर इट इज टेकन इन सेंटीमीटर, वेदर इट विल बी टेकन इन मीटर्स, वेदर इट विल बी टेकन इन सेकेंड्स, वेदर इट विल बी टेकन इन मिलीलीटर्स, किस यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, दैट यू हैव टू मेजर इट राइट इन result of this study. Then your design of the study, this is very important while writing a research proposal कि आप जो स्टडी कंडक्ट कर रहे हो उस स्टडी के हिसाब से आपका डिजाइन क्या होगा, वेदर इट इज ए रिपीटेड मेजर डिजाइन, वेदर इट इज ए रैंडम ग्रुप डिजाइन, वेदर इज ए मल्टीपल ग्रुप डिजाइन, आपका कौन सा डिजाइन है। रिपीटेड मेजर डिजाइन हम तब यूज करते हैं व्हेन वी आर टेकिंग डाटा ऑन द सेम सैंपल ग्रुप फॉर रिपीटेड पीरियड ऑफ टाइम, राइट। अगर मेरे को होल ईयर में टेम्परेचर वेरिएशन का परफॉर्मेंस देखना है तो जनवरी में मैंने एक टेस्ट लिया, फिर मार्च में लिया, फिर जून में लिया, फिर नवंबर में लिया, दिसंबर में लिया, बट द सेम सब्जेक्ट्स आर बीन टेस्टेड इन दिस मंथ्स, so it comes under repeated measure design. Then equated measure, if you are doing any experimental design, so while distributing your subject to different experimental group you have to equate all the subjects. तो उसके लिए आपको पहले प्री टेस्ट लेके सब्जेक्ट्स को इक्वेट करना पड़ेगा, देन रैंडमली यू असाइन डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स। सो अंडर डिजाइन ऑफ द स्टडी व्हाट डिजाइन यू आर गोइंग टू adopt while conducting your research is to be mentioned. Then testers reliability and reliability of test. Various test has given its reliability. It has a reliability, it has its validity, everything. But whether the tester is competent enough to conduct the test is a bit of concern, right? For example, I want to take blood pressure, right? Systolic and diastolic blood pressure. How many of research scholar they are well trained to conduct a test on blood pressure
without electronic sphygmomanometer, right? अगर नॉर्मल मैनोमीटर से और स्पिग्मोमैनोमीटर से अगर आपको ब्लड टेस्ट करना है, हाइपरटेंशन टेस्ट करना है, ब्लड प्रेशर चेक करना है, तो कितने लोग इसमें एक्सपर्ट हैं? नहीं है, देन वी हैव टू mention the tester's reliability and reliability of test. For this, the normal procedure adopted is the research scholar undergoes a training with an expert for a quiet period of time in collecting the blood pressure. ब्लड प्रेशर कैसे कलेक्ट करना है, उसका जो लुप डुप का साउंड है वो कैसे फील करना है, व्हेन टू कंसीडर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड व्हेन टू कंसीडर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो आसानी से पता चल जाता है, लेकिन डायस्टोलिक प्रेशर में जब डुप का साउंड इज कन्वर्टेड इनटू अ साउंड ऑफ बज, so that is most important and significant point where we have to discriminate that this is the point where diastolic blood pressure starts. This is the feeling point. So expert के साथ कई training schedule में जाता है. Then we conduct a test. Subjects conduct a test on the same subject and the expert takes the data on the same subject. Then on the basis of Pearson product movement correlation, we find out the correlation. If the correlation is good, if the correlation is more than 1, then we say that the tester's reliability and test reliability is been settled. उसी प्रकार से we find out the reliability of data. हम कोई एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट यूज करते हैं, देन इंस्ट्रूमेंट रिलायबिलिटी, वो इंस्ट्रूमेंट वाकई में आपका डाटा लेने के लिए सक्षम है या नहीं है, क्या उसका कैलिब्रेशन किया गया है. अगर उसमें स्प्रिंग लगा हुआ है और बहुत पुराना है तो जंग लगने के कारण भी उसका कैलिब्रेशन बिगड़ जाता है. बेसिकली इट इज फेल्ट व्हेन वी टेक स्किन फोल्ड मेजरमेंट्स. तो उस समय क्या उसका कैलिब्रेशन बार बार किया गया है, तो we have to find out the instrument reliability also, and that is calculated along with testers reliability and reliability of data. Then collection of data, this is also most important. I have explained earlier that when you are going to collect data, that you have to explain the data will be collected in the morning hours between 10 to 11 a.m., right, in the month of so and so. So it clearly depicts that the research scholar was knowledgeable enough, competent enough, and he has a thorough knowledge that the environmental factor and time factor also affect the performance. And to eliminate all those things, we can write that the data is being collected, data will be collected on so and so time between 8 to 10 a.m. or between 9 to 10 a.m. or between 10 to 12 a.m., right, in the month of January, February, whatever month you are going to collect data. Then statistical technique to be used. This is the heart of the research. अगर रिसर्च का हार्ट कुछ है तो that is statistics. If the statistical application is wrong, your findings will be absolutely waste. Right? For example, एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि एक स्टडी आया था मेरे पास फॉर इवेल्युएशन, और उसमें उस लड़के ने, दैट बॉय हैज टेकन ए स्टडी बिटवीन हाई फिट एंड लो फिट हॉकी प्लेयर्स. So I have asked a question, how you have found that certain players are low fit and certain players are high fit? Sir, he told me, उसने मुझे कहा सर हमने डाटा कलेक्शन किया, डाटा कलेक्शन के बाद फॉर एग्जांपल आई हैव कलेक्टेड डाटा ऑन 120 स्टूडेंट्स, तो 40 लोअर परफॉर्मेंस को हमने लो फिट कर लिया, बीच के जो मिडिल 40 है उनको एलिमिनेट कर दिया, और ऊपर के 40 जो हैं बाकी बचे हुए उनको हाई फिट प्लेयर्स कंसीडर कर लिया. आई सेड वेरी गुड, इट्स वेरी ट्रू, लेकिन आपने कौन सा टेस्ट कंडक्ट किया? तो उसने बोला हमने स्पीड लिया,
हमने स्ट्रेंथ लिया, हमने कार्डियोवास्कुलर टेस्ट लिया। मैं बोला ओके दैट इज ऑल्सो ट्रू। स्पीड का यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? दैट इज ही सेड सेकेंड। मैं बोला स्ट्रेंथ का, बोले स्टैंडिंग ब्रॉड जंप इट इज इन सेंटीमीटर्स। अब मैंने उसको पूछा क्या अभी आप सेकंड को सेंटीमीटर में ऐड कर सकते हैं? नो, बिकॉज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स आर डिफरेंट। सो इसमें आपको स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन एच स्केल लगा के you have to convert each and every data into a unique jet score। एच स्कोर में आपको कन्वर्ट करना था। वो एच स्कोर में कन्वर्ट करने के बाद स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन के बाद फिर आप लोअर 40 और अपर 40 रखते तो दैट इज डिफरेंट। तो हिज एंटायर रिसर्च वर्क is been spoiled due to only a silly statistical technical mistake. So while selecting a statistical technique, you should consider your research guide or a statistical expert before considering for your research proposal. If it is a survey related study, your chapter 3 में जहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट यूज करते हैं वहाँ पे आपका सर्वे पॉपुलेशन कौन कौन से सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स के जगह आप सर्वे पॉपुलेशन को सिलेक्ट करते हैं जिनके ऊपर आप सर्वे करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनर, इफ द क्वेश्चनर you are not using standardized, then you construct a questionnaire, you will prepare a blueprint of the questionnaire, then you will collect data, then you will design your study, then administration of टेस्ट क्वेश्चनर को आप कैसे एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, whether it will be face to face administration of questionnaire or you will be using certain media whether through email or through postage, किस प्रकार से आप वो क्वेश्चनर को एडमिनिस्टर करेंगे, that everything has to be explained in this, and then the statistical technique that is to be used. Okay, then you write fourth and fifth chapter in a very summarized form because these are only done in your research report, so it does not include in your research proposal. Then the reference material. While reference material is your last section of your research proposal, or when you write a footnote, or when you write a after completion of your chapter you write references, or references are given at the end of the thesis. So it includes a bibliographical statement, which is the last section of the research proposal, the list of relevant sources used by research scholars in writing a thesis. Here, what you do, you give the relevant sources which you have taken for your study. The credit is to be given to those resources. It should include in all references appearing in footnotes or references. Certain format university therefore use footnote as a reference material. Certain university what they consider, they include reference after the completion of each chapter. Then these are classified and divided into three heads: books, periodicals, and miscellaneous. Okay, the references are arranged alphabetically under each head using the surname first. जब आप bibliographical form में references लिखेंगे तो ये alphabetical form में होना चाहिए, A B C D E F till Z, and it should be with surname first. For example, I am Tapan Datta. So you in the reference you have written footnotes Tapan Datta, but in bibliographical form you will write Datta Tapan. So I will move to the D part. If the author has more than one references, it should be arranged in alphabetical order of the title under his name. If the author has published books jointly with others, his single reference should be listed first, then the joint publication in alphabetical order. This is what the manuscript, the format what we normally follow in APA format, right? So there are various ways and means of writing the references and footnotes.
So what are the reference? Mostly in all the universities, and basically the present in research scenario, we we follow APA system. That is the American Psychological Association. They have made a format, and that format we have used. The basics of the reference लिस्ट एंट्री ऑफ द थीसिस और डिसर्टेशन इज, सबसे पहले जो है जब आप फुटनोट्स लिखते हैं या रेफरेंस लिखते हैं, सबसे पहले ऑथर का नाम आना चाहिए. द सरनेम इज फॉलोड बाय इट्स फर्स्ट इनिशियल. फॉर एग्जांपल आई एम तपन दत्ता, तो पहले तपन, उसके बाद दत्ता, सबसे पहले ऑथर का नाम. देन ईयर इन राउंड ब्रैकेट, कौन से साल में वो आर्टिकल या वो रिसर्च वर्क पब्लिश हुआ है, that you have to mention. Then the title, वो रिसर्च वर्क का टाइटल क्या है, it should be written in italics. Then level of thesis और dissertation, उसके बाद वो थीसिस का लेवल क्या है और या डिसर्टेशन क्या है, whether it is UG, whether it is PG, or whether it is PhD level thesis or dissertation. Then university from where it is been published, कौन सी यूनिवर्सिटी से वहाँ पब्लिश हुआ है या कौन सी यूनिवर्सिटी में उस थीसिस को या डिसर्टेशन को अवार्ड किया है. Then database or archive name. If you are taking through internet, then you have to mention the URL reference, URL number. That is universal referral number. You have to mention there. Then the first line of each citation is left adjusted. Every subsequent line is intended 5 to 7 space. I will show in the example. यहाँ पे देखिए मैंने एक रेफरेंस, is it visible to everyone? Is it visible? Okay. If you'll see, I have taken this reference from internet. So while writing the references, I have taken certain content from this reference. So content I have mentioned in my introduction or in my review or in discussion. So that credit I have to give to the original source. So the author name, Mosaic E, is the name of the author. Then the year in which it has been published is 2017. It is written in black name. Then the title is in italic, that is the team flow, the missing piece of performance. This is the title. Then the level of thesis, this is a doctoral dissertation. From which university? It is the Victoria University. Then the database of archive, that is the Victoria University Research Repository. And what is the URL number? On a universal referral list, that is HTTP. If you type this, you will get these references from the same source which you have taken the references. While writing the bibliography, you will see that I have started the name, and then in the second line I have given an intent of 5 to 7 space. This is the normal format which we follow. Then if there is a single author and I have taken the references from a book, how I am going to write? It is a Dennis Keith Lilly, 1984 is the year of publication. Then the name of the book. If there is an edition, you write that edition. Here it is second edition. Then the place of publication, it is published from Sydney. Then the name of the publisher is Mithun Australian Private Limited, and then your page number. This is how we write a bibliography if it is a single author and if it is from book. If it is from the book and there are two authors, same procedure we follow. We write the name of both the authors, Dennis Keith Lilly and David Lloyd. Year of publication 1984, it is in bracket. Lilly Over and Out, second edition book. Place of publication is Sydney. Publisher is Mithun Australian Private Limited. Page number is 172. If it is two authors. If there are three authors,
Then we write the name of all the three authors. One is D.K. Lilly, D. Lloyd, and D.J. Lloyd. 1984, Lilly over and out, second edition. Then the place of publication, publisher, and page number. The same procedure is been followed. But if there are more than three authors, if there are more than three authors, suppose 4, 5, 6, 7 authors, then what procedure we follow in writing a bibliography, a reference, is the name of the first author, that is D.K. Lilly. Then we write ETAL. It is a Greek word, it means more than one, right? Then you write the year, you write the name of the book, you write the edition, you write the place of publication, you write the name of the publisher and page number. This is the format we follow when we are writing a reference for more than three authors. If there is a single author from journal, till now what we have discussed, if we are taking any references from books, but if we take references from any journal, then the name of the author, then the month and year of publication. In books, what we have done, we have taken only the year of publication. But in journal, because there are certain journals which are biannual, there are certain journals which are uh, published quarterly, right? That is 3 months. There are 4 publications where there are 2 publications. So under certain circumstances, they mention the month also, the which month it is been published and which year it is been published. If it is an annual journal, then there is no need. You may not mention the month. You can directly mention the year. Then the title in italics. The title of the topic was Diurnal Variation in Athletic Performance. It should be in inverted comma. Then from which journal I have get this reference? It is the Journal of Applied Physiology. The name of the journal is Journal of Applied Physiology. Then it has certain volume. The volume is 236, and after colon we mention the page number. The page number is 51. So when the future research scholar want to refer the reference what he have taken, and he want to do more study in that, he can directly visit to this journal. He can directly visit to this page number. He can search this volume, author, topic, and the journal, so that he can find more references if he needs to be. If it is 2 authors, then again, name of the 2 authors, the month of publication, year of publication, then the title, it should be mentioned in italics, name of the journal, volume, if any. If they don't have any volume, it does not require. If they have a volume, then you write the volume and the page number. Okay. Then if 3 authors, again, write the name of 3 authors, month of publication, year of publication, and rest all will be the same. Again, if more than 3 authors from journal, you write the first name of the author, then you write ETAL, July 19, which month and year, then your title, then name of the journal, volume, and page number. This is the basic methodology which we follow in writing a reference. If it is from newspaper, if you have taken any references which you find that it is appropriate and required for your research work, you can take those from newspaper. So how to write references if we have taken any matter from newspaper is the name of the author. It is Yashpal Singh. Date, month, and year of publication. Because July 28, 1983. That means the title Downfall of Indian Hockey. It was published in newspaper The Times of India. Then edition, because different newspaper have different edition. Some newspaper, The Times of India, is also published from Nagpur. It may be published from
Chandigarh, it may be published from Delhi, it may be published from Bombay. So they don't have similarity. For that, the edition. Which edition? It is a New Delhi edition. Then the page number, from in which page you will find this reference, and column, in which column, right? It is column number 5. The title, Downfall of Indian Hockey, is there. So while taking any references from newspaper, you write the first name of the author, then date, month and year in bracket, then the title of the topic, then which newspaper you have got these references, then the edition of that newspaper, then page number and column. Okay. If you have taken any references from encyclopedia, then author's name, year of publication, title, hockey past and present is the title, then the name of the encyclopedia, World Book of Encyclopedia, volume, it is 17, right, and page number. That means in volume 17, page number 315 of World Book Encyclopedia, hockey past and present, I will get the references. Okay. So this is what I want to conclude here with. But the most important thing while writing a research proposal is that it should always be written in future tense. The most important thing, रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस जिसे हम कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, ये हमेशा भविष्य काल में के फॉर्मेट में लिखा जाता है, राइट? While presenting, while writing a research, the font you use should be very clearly visible. Basic font are to be used. Either Arial or Times New Roman, such type of fonts are used, which are very easily readable, right? And while presenting those in a paper size, that is normal paper size, worldwide universal paper size, which is being used is A4 size. The margin which you keep for writing a research proposal or research report is left margin should be 1.5 inches, top margin should be 1.5 inches, right and bottom margin should be 1 inches. Why we keep 1.5 inches in the left side? So that certain amount of margin is being taken by while binding. And why on the top? Because there you mention your page number in header. उसीलिए जो है ऊपर भी 1.5 इंच का मार्जिन रखना है, लेफ्ट साइड में भी 1.5 इंच का मार्जिन रखना है, राइट और बॉटम में 1 इंच का मार्जिन आपको रखना है. Then which type of font size is to be used? Basically जो मेन हेडिंग्स है that are used in font 16, जो सब हेडिंग्स हैं वो font 14, और जो नॉर्मल टाइप है that is used in font 12. It may vary, ये वेरी करता है from institution to institution, but the basic manuscript which is been followed universally is 16, 14 and 12. If not, then 18, subheadings 16, उसके बाद अगर सब हेडिंग्स हैं तो 14 and the normal typing is of 12. The headings are in bold and normal typings are to be done in normal without bold, right? And the spacing between the each line is 2. दो का जो है हमको स्पेसिंग देना है, राइट? 2 सेंटीमीटर का स्पेसिंग हमको उसमें रखना है. Typing is to be done in one side of the page, but various university now they say that we have to prevent wastage of paper. तो पेपर वेस्ट को, ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए they allow both side, but basically it is to be written on the one side of the page. So thank you for giving me this opportunity. If anyone has a question, they can ask. I think I have completed within the stimulated time. Yes, sir. There is one question. Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. One question is there.
What is the difference between research proposal and synopsis? Research proposal and Synopsis. second. I am not audible. Synopsis. Synopsis. Yes. It's same. It's same. Synopsis, we use the term while presenting in most of the university, but basically it is a research proposal only. है ना? What research work a research scholar is going to pursue is been presented in the form of research proposal or synopsis. It is same. There is no difference. No difference in the presentation of research proposal or synopsis. It is a synonymous name, you can say. Thank you, sir. Any other questions? No? Okay. Thank you very much, sir. Actually देखा जाए तो जो अभी का आज का सेशन था काफी इंटरेस्टिंग था और स्पेशली वो बच्चों के लिए क्योंकि आप अभी उसी प्रोसेस में हैं कंटिन्यूअसली ये आपको बार-बार रिमाइंड करते हुए बार-बार बताने के बावजूद भी आप ये सारी जो छोटी-छोटी बातों पे सर ने बहुत ही अच्छे ढंग से फोकस किया है, ये मिस्टेक्स करते हैं आप। लाइक एक छोटा-सा एग्जांपल जैसे सर ने आपको बताया एपीए स्टाइल। इतने बार बोलने के बाद भी आप कहीं पे जहाँ मर्ज़ी होती है वहाँ पे एपीए स्टाइल यूज़ करते हैं, जहाँ मर्ज़ी हुई वहाँ एमएलए यूज़ करते हैं, जहाँ आप मर्ज़ी हुई फॉरवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है? लेकिन मेन पर्पस ये था कि सर ने बहुत ही अच्छे ढंग से उन सभी छोटी चीज़ों को रिवाइज़ किया, रिमाइंड किया क्योंकि आप फर्दर अभी इसी प्रोसेस में जाने वाले हैं। तो ये जो सेशन था एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ पीजी स्टूडेंट, एज़ अ डीपी प्रोग्राम काफ़ी यूज़फुल सेशन था। मैं ये मान के चलती हूँ कि इस लेक्चर के बाद वो मिस्टेक आपसे दोबारा रिपीट नहीं होंगी। So for this, with these words, I thank to Ratan Datta sir for delivering such a wonderful lecture on research proposal. Definitely, we will keep in mind while preparing our research proposal. Thank you very much, sir. Thank you everyone. With the permission of एफडीपी कन्वीनर ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है ऐसा मैं घोषणा करती हूँ। थैंक यू।